हेलो वेलकम बैक टू द थर्ड मैन क्रिकेट शो। अंकित, मैच देखा कि नहीं देखा आज का? या आई मीन बहुत मजा आया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वनडे क्रिकेट बहुत टाइम से खेला नहीं था। खास करके अगर आप इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट का इतना क्रेज है एंड देन यू गॉट T20s कमिंग अप, वहाँ पे ऐसा अगर वनडे सीरीज या फिर वनडे मैच हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर अपकमिंग जो 2 मैचेस है उतने एक्साइटेड होंगे। बट पर्सनली आई थिंक थोड़ा एक वाइब मिला कि हाउ वी वांट एज अ फैंस की वनडे क्रिकेट कैसा हो। बहुत लो स्कोरिंग गेम, बट जहाँ पे moments where you thought that दोनों टीम में बहुत कम डिफरेंस था। that is what I would say. I think बहुत अटैकिंग गेम, बट विकेट्स भी दोनों टीम के गिरे, एंड दैट वाज एक्चुअली फन टू वॉच। द करण वनडे एंड वानखेड़े में था, सो इट वाज अ टोटली डिफरेंट वाइब, द काइंड ऑफ फैंस आए थे, एंड इट वाज जस्ट फन वाचिंग देम, द chants, and also it was fun. हाँ यार, मतलब वानखेड़े जाना जाता है मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स। मतलब जब टॉस जीता था इंडिया ने, मेरे को तो लगा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी, कम से कम क्लोज टू 300 के आसपास रन तो बनाएगी मिनिमम, मेरे को लग रहा था। बट देन बॉलिंग वाज रियली गुड, फील्डिंग वाज रियली गुड यार। मतलब आई थिंक कैचिंग वाज ब्रिलियंट बोथ द साइड्स, नॉट जस्ट इंडिया। और आई थिंक 9 ही मैच खेल रहे हैं ना, आई थिंक वर्ल्ड कप के पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Maybe, if I'm not wrong, शायद आई 12 if we थिंक consider this series, maybe या 12. और आई थिंक सितंबर में विल प्ले। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया दोबारा आने वाली है, आई थिंक 2 या 3 मैच Yeah. खेलने शायद। तो आई थिंक मैचेस कम है, तो आई थिंक ये तो वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के हिसाब से सबको सारे मैच खेलने बहुत जरूरी है। एंड बट ब्रिलियंट विन, केएल राहुल बहुत बढ़िया इनिंग्स यार। प्रेशर में आने के बाद आई थिंक केएल राहुल ओडीआई में बहुत अच्छा खेलता है। आई थिंक केएल राहुल इन टेस्ट मैचेस एंड केएल राहुल इन वाइट बॉल फॉर्मेट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑपोजिट प्लेयर्स लगते हैं मेरे को। तो तेरे को क्या लगता Yeah. है? Yeah, definitely, because Abhinav, if you see पिछले कुछ time से, let's be very fair, form definitely down है थोड़ा. He has been not good with the bat in, अगर खास करके वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज देखे तो. But Bangladesh में he played a crucial knock. Then Sri Lanka के against, when in Kolkata we were struggling, he played a crucial knock. And now in this chase, I think tricky chase था. I think पिछले कुछ time से we have been in certain situations where 200 250 थोड़ा challenging रहा है. But that's the thing, you want to test the batting unit, and I think this was a very perfect time for him, because काफी बातचीत रही केएल राहुल के अराउंड ऑन सोशल मीडिया एज वेल, फैंस के अराउंड, मैनेजमेंट के अराउंड. ही वाज रिमूव्ड एज अ वाइस कैप्टन फ्रॉम द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. आई थिंक थर्ड मैच से उन्होंने शुभमन गिल वाज रिप्लेस्ड. सो दिस शोज कि अभी फॉर हिम इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वेयर वी वांट मिडिल ऑर्डर बैटर्स टू गेट थिंग्स डन फॉर अस, जहाँ पे इट वाज लाइक कि टॉप ऑर्डर के ऊपर हम लोग बहुत रिलाई करते थे. इफ यू रिकॉल शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आई एम प्रीटी श्योर अभी भी दे विल बी द players to watch out for, the likes of Rohit and Kohli, but middle order step करते, I think it feels good, to be honest, going into the World Cup. हाँ मतलब करना पड़ेगा यार। अभी ये जो जडेजा और राहुल की जो पार्टनरशिप थी, ये नहीं होती अगर एक बैट्समैन हम कम खेल रहे तो शायद हम ये मैच हार भी जाते हैं आज। बट होपफुली Yeah. दिस कंटिन्यूज, और ऊपर की टॉप ऑर्डर जैसे तूने कहा, रन तो बनाने पड़ेंगे यार। रोहित शर्मा आई थिंक विल बी हैप्पी टू सी द विन, बट वो जो ऊपर जो हमने विकेट भी खोए हैं, आई थिंक उससे थोड़ा टेंशन भी आ रहा होगा। थोड़े कमेंट्स ले लेते हैं, 2-4 लोग आ भी गए यहाँ पे। डेविल गेमिंग इज योर हाई, डेविल गेमिंग, रोमिक हाय, रोमिक, अभिषेक हाय। सो देखो अभी the focus is completely going to shift on the IPL after ये जो भी 2 मैच बचे। एक आई थिंक विशाखापट्टनम में, और आई थिंक एक और कहीं तो मेरे को याद नहीं। चेन्नई. किधर? चेन्नई? या अरे वाह, चेपॉ. तो चेन्नई का तो मैच देखना पड़ेगा। चेन्नई में तो अच्छे मैचेस होते हैं इंडिया के। Yeah. बट या उसके बाद द थिंग इज, कितने 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं एंड द आईपीएल इज गोना कमेंस। 10-11 दिन में मैच शुरू हो जाएंगे सारे I आईपीएल के। think the next to next Friday, I think 31st को, so 2 weeks, perfect 2 weeks to go. हाँ, तो आई थिंक उसका क्रेज अभी शुरू होने वाला, तो दैट इज द रीजन हम लोग आज आईपीएल की बात ज्यादा करने वाले हैं। Yeah. टीम्स में क्या चल रहा है, कैंप्स में क्या चल रहा है, ये सब जो भी न्यूज वगैरह आ रही है वो सब हम देखने वाले हैं। कौन से प्लेयर अभी तक फिट नहीं है, कौन से प्लेयर आएंगे नहीं आएंगे खेलने, कौन कब आएगा खेलने, कौन कब खेल के निकल जाएगा जल्दी, ये सब हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे आज। मतलब इन डेप्थ एनालिसिस वगैरह तो नहीं करेंगे, हम विल जस्ट डिस्कस ऊपर ऊपर से व्हाट आर द टीम्स अप टू। तो अंकित, क्या लगता है कौन सी टीम से अपन लोग को स्टार्ट करना चाहिए? आई थिंक Abhishek is Yeah. asking MI team update. So Yeah, let's go with MI. yeah, I think MI ने उनके सोशल मीडिया पे आई थिंक देयर वाज वन फोटो जहाँ पे डेवल्ड ब्रेविस एंड आई थिंक ड्वान जैनसन दोनों आ चुके थे टीम में। सो व्हाट डू यू थिंक? आई मीन जसप्रीत बुमराह फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं अभी बता दूं, जो भी लोग स्ट्रीम देख रहे हैं प्लीज सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर दो, और जो बाद में देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है तो। सो
जसप्रीत बुमराह इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस ऑफ कोर्स फॉर मुंबई मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आई Yeah, थिंक प्रोबेबली वो जो होता है ना, जो एक एक पीस रहता है बिटवीन विनिंग द टाइटल एंड नॉट विनिंग द टाइटल, आई थिंक जसप्रीत बुमराह इज दैट फॉर मुंबई इंडियंस, क्योंकि ये जोफ्रा आर्चर आएगा, ठीक है, खेलने तो yeah, आने वाला है, वो 100% आने वाला है। कितने मैचेस खेलेगा आई डोंट नो, वो वर्कलोड मैनेज करने के लिए आई थिंक उसको थोड़ा ढंग से ट्रीट करना पड़ता है, वरना वो थोड़ा जल्दी टूट जाता है। जाय रिचर्डसन इज नॉट देयर, ठीक है, वो भी आई थिंक इंजर्ड है, तो उसका आई थिंक रिप्लेसमेंट आया है कि नहीं आया अभी तक मैंने देखा नहीं है। बट अदरवाइज yeah. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस टीम? कैन दिस टीम विन अ टाइटल? I feel like if you look at batting, I think we can say I think एक बहुत अच्छी batting unit है, might be one of the best going into the IPL 2023 because the likes of Rohit Sharma, Ishan Kishan, Cameron Green might be the player to watch out for. Ishan Kishan है आपके पास, I mean then Surya Kumar Yadav, Tilak Verma had a splendid season in the last IPL, so बैटिंग बहुत अच्छी है, बट गोइंग इनटू द बॉलिंग एंड आई फील कि जहाँ पे ऑलराउंडर्स व्हेन I mean, you also might know कि the likes of हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, आई थिंक इन्होंने जो ऑलराउंडर्स का वो जो एक बार होता है, आई थिंक उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो सेट किया था, एंड एमआई ने उसके बाद वो लेगेसी भी फॉरवर्ड खास करके 2-3 वेयर दे लुक फॉर ऑलराउंडर्स, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द लाइक्स ऑफ कैमरॉन ग्रीन माइट प्ले क्रूशियल रोल. बट बॉलिंग की आई फील लाइक कि in the absence of Bumrah, I do feel like ki it's an opportunity for MI because over the years there have been times where हमने देखा है कि या फिर सुना है या फिर MI is all about कि जसप्रीत बुमराह होता है इसलिए they just able to win the matches, but I think this might be the time. And even अगर बुमराह नहीं है आप पकड़ो, and even if you look at bowling unit, I think अगर even if you look at जोफ्रा आर्चर खेल लेते हैं, assuming कि संदीप शर्मा रिप्लेसमेंट है बुमराह के, वो खेल लेते हैं, then Shams Mulane, I think, is a good all-rounder. So bowling, I feel they can manage, but it might all come down to की consistency क्या throughout the season रख पाएगी उनकी bowling unit खास करके, and that will be the deciding factor for Mumbai Indians. हाँ What देख, do you क्योंकि feel? क्या है ना, बुमराह अभी आउट हो गया तो फिर द थिंग इज थोड़ी ना चेंजेस करने पड़ेंगे बॉलिंग अभी Yeah, उनको लाइनअप में। मे बी दे हैव टू प्ले लाइक टू एक्स्ट्रा बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ कि ऑलराउंडर खिला लो ज्यादा, बिकॉज बॉलिंग ऑप्शंस नहीं होंगे अगर बुमराह नहीं रहेगा तो। सो आई थिंक दिस गिव्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर समवन लाइक शम्स मुलानी टू बी अ रेगुलर इन दिस टीम, ठीक है, yeah, क्योंकि कुमार कार्तिक आई थिंक ही विल प्ले, ऐसा मेरे को लग रहा है, बिकॉज ही इम्प्रेस्ड लास्ट सीजन एज वेल। आई थिंक इसमें कैमरन ग्रीन खेलने वाले जो एक बॉलिंग ऑप्शन yeah. देंगे, जोफ्रा आर्चर इज अनदर जो तीसरा ये बॉलिंग ऑप्शन हो गया। देन देयर इज गोइंग टू बी ऋतिक शौकीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु वाज द ऑफ स्पिनर जो खेले थे, आई थिंक ही कुड Yeah. bowl एज वेल ऑफ स्पिनर्स। बट द थिंग इज बुमराह को अगर हटा दिया ना तो दिस बॉलिंग लाइनअप लुक रियली रियली वीक ना। बट व्हाट डू यू फील लाइक कि जा रिचर्डसन का, आई मीन अभी तक खबरें वी ऑब्वियसली हमने देखा कि संदीप शर्मा शायद हो सकते हैं लाइकली रिप्लेसमेंट बुमराह के, बट व्हाट डू यू फील कि जा रिचर्डसन, आई थिंक हु माइट रिप्लेस हिम बिकॉज ओवरसीज बॉलर आई एम प्रीटी श्योर एमआई के माइंड में होगा खास करके इन द एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, सो हु इज द लाइकली पॉसिबिलिटी टू रिप्लेस जा रिचर्डसन, एंड इवन कमेंट्स में बताओ आप लोग. हाँ, आई थिंक मैंने ना बीबीएल ये साल देखा था, ठीक है, सो वन बॉलर आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद इज हेनरी थॉर्नटन, ठीक है, ये आई थिंक हेनरी थॉर्नटन है, कुछ तो नाम है इसका, एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहा था, एंड इफ एमआई कैन गेट एन ऑजी फॉर एन ऑजी एज अ रिप्लेसमेंट, एंड ही आई थिंक ही वाज कंटेंशन में था टू बिकम आई थिंक द लीडिंग विकेट टेकर, या लीडिंग विकेट टेकर था ये सीजन, आई डोंट Yeah. रिमेंबर, बट ही वाज देयर, क्योंकि 16-17 विकेट तक तो मैंने देखा था कि ही वाज देयर इन द लिस्ट। सो I think Henry Thornton is one player जो I think Mumbai can target, but otherwise I think Nathan Ellis बिका था कि नहीं बिका था पंजाब के लिए Yeah. इस बार? Nathan Ellis, if I'm not wrong, he's not part of any IPL team. Yeah, so I think Nathan Ellis is one good shout as well. So I am looking at Australian fast bowlers only, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि थोड़ी पेस तो लगेगी, बिकॉज इसमें आई थिंक देयर इज ओनली जस्ट जोफ्रा आर्चर जो पेस पे रिलाई करता है, बिकॉज मुंबई इफ यू सी जेम्स पैटिंसन ही वाज फास्ट एज वेल, देन देयर वाज जसप्रीत बुमराह वाज फास्ट एज वेल, सो आई Yeah. थिंक वो थोड़ा रिप्लेस करने में देखना पड़ेगा। या टीजी वाइपर इज सेइंग हेनरी थॉर्नटन एज वेल एज मैट हेनरी, या मैट Yeah. हेनरी इज अ गुड शाउट एज वेल। अभिषेक इज सेइंग मिचेल स्टार्क, हाँ यार मिचेल स्टार्क, बट वही है ना, वो मना कर देता है यार हर साल खेलने से। सो एलिस है भाई, एलिस बिका हुआ है पंजाब में, मेरे को You कहीं तो feel like कि the likes of डोन यानसन या फिर अर्जुन तेंदुलकर को चांस मिलेगा, खास करके उम्मीद है बहुत लोग की बात भी हो रही है कि अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलना चाहिए. डू यू फील कि ये सीजन है जहाँ पे द लाइक्स ऑफ अर्जुन तेंदुलकर खास करके माइट गेट अ चांस?
आई स्टिल डोंट थिंक सो, बिकॉज इसमें अगर मुंबई की 11 बनानी होगी तो क्या होगी तेरी, मेरे को बता। चैट में भी यार जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज फटाफट अपनी अगर Yeah, 11 let's बना let, सकते हो let's मुंबई do की it. तो बता दो। लेट्स डिस्कस द 11 जो फिक्स खेलने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स Hmm. टॉक अबाउट दैट। रोहित शर्मा एक तो खेलेगा, ठीक Yeah, है। टिम डेविड, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओवरसीज प्लेयर्स, कौन खेलेंगे। सो टिम डेविड इज Hmm. गोना प्ले, जोफ्रा आर्चर इज Cameron गोइंग टू Green. प्ले, कैमरन ग्रीन इज गोइंग टू प्ले, सो दीज Yeah, थ्री आर गोइंग टू प्ले। एंड यहाँ पे जो डेविल ने सवाल पूछा था कि एमआई को अगर एक खिलाना है दोनों में से तो किसको खिलाओगे, इफ गिवन मेरे पे अगर चॉइस थोड़ी, तो देन आई वुड प्ले ट्रिस्टन स्टब्स, क्योंकि डेवॉल्ट ब्रेविस का ये साउथ अफ्रीका 20 वाला जो T20 कंपटीशन था वो अच्छा नहीं गया था। मैंने सारे मैचेस देखे थे Hmm. एमआई केप टाउन के, पहला मैच छोड़ के आई डोंट थिंक ही स्कोर्ड रन्स कंसिस्टेंटली इन दैट टूर्नामेंट। एंड ट्रिस्टन स्टब्स ऑन द अदर हैंड, इसने एक दो मैच भी जिताए थे अलग से, आई थिंक Yeah, केप जो भी सनराइजर्स की जो टीम थी उसको। सो आई थिंक, yeah, एंड ये बॉलिंग ऑप्शन तो देते हैं दोनों के दोनों। ट्रिस्टन स्टब्स तो विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देता है, सो आई थिंक आई विल पिक ट्रिस्टन स्टब्स। बट वन yeah. मोर रीजन फॉर मी टू पिक अप ट्रिस्टन स्टब्स इज कि उसकी जो बैटिंग पोजीशन है, आई Hmm. वांट यू नो ईशान किशन ऊपर खेलेगा, रोहित शर्मा ऊपर खेलेगा, कैमरन ग्रीन इज नाउ इन द स्क्वाड एज वेल, इवन ही वांट्स टू प्ले हाई इन द ऑर्डर, सूर्य कुमार Hmm. यादव, तिलक वर्मा, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप 5। इसमें यू Yeah. कैनॉट ऐड डेवॉल ब्रेविस मेरे हिसाब से, बट इफ यू ऐड ट्रिस्टन स्टब्स विद टिम डेविड उनके नीचे, देन दैट इज अ Hmm. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप। या बट अभी नो आई मीन शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ बट आई फील लाइक कि द लाइक्स ऑफ जेसन वेंड्रॉफ एंड जोफ्रा आर्चर विल बी द ऑब्वियस चॉइस, कैमरॉन ग्रीन भी खेलेंगे एंड आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि शायद टीम डेविड स्टार्ट करेंगे एज अ फोर, सो आई डू फील लाइक कि डेवॉल्ड और क्रिस्टन सब्स खास करके इनिशियली माइट नॉट गेट अ चांस। यू एग्री विथ मी और यू फील नहीं, लाइक कि वन ऑफ देम विल स्टार्ट? वन ऑफ देम विल प्ले ओनली बिकॉज मुंबई का जो मिडल ऑर्डर था ना वो पिछले सीजन में थोड़ा बैकफायर कर गया, व्हेन सिंस हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और पोलार्ड निकल गए। उसके या बाद से दे ओनली रिप्लेस्ड, आई वुडंट से रिप्लेस्ड, बट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के लिए दे हैव ट्राइड ओनली टिम डेविड। सो आई थिंक वो चीज दोबारा गलती करनी नहीं चाहेंगे वो। I think that is the reason I see Jason Behrendorff maybe not playing, जितना सब लोग को लग रहा है। ओके Yeah, क्योंकि Green, I think Green will open with Rohit Sharma. Ishan Kishan did really well in 2020 जब मुंबई लास्ट जीती थी. He scored around 500 runs or something, batting at number 4. And Surya अगर वापस आते, and now Surya can bat at number 4 as well because he's doing it for India. So 3, 4, 5 with Surya Kumar Yadav, Ishan Kishan and Tilak Verma is not bad मेरे हिसाब से. या I think एंड व्हाट Cameron डू Green, फील लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बिकॉज आई थिंक दिस सीजन में ये चीज जो सबसे नहीं होने वाली है एंड इवन जो जो लोग कमेंट्स में देख रहे हैं अभिनव प्लेयर टू बी इन द impact player list because that's one thing that is the new rule going into the upcoming IPL, so because वो बहुत crucial होगा and I'm pretty sure बहुत टीमें बहुत crucial तरीके से उसको उपयोग करेगी, so who might be the potential impact player? Obviously वो टॉस के बेसिस पे ही होगा but आपके हिसाब से who might be the player commonly जो यूज करे जाएंगे I impact think player? it will be Ramandeep Singh only because he can bat and he can bowl as well. So मेरे Yeah. को लगा it could be Ramandeep Singh because he मुंबई का बहुत खराब सीजन गया था पिछले साल, but he was one of the क्या बोलते हैं positives from the Mumbai camp last season. Yeah. Decent medium pacer, he could bat as well. I think एक दो मैच में बैटिंग भी अच्छी करी थी. So yeah, Hmm. I think Ramandeep Singh could be used Yeah. as an impact player. उसके Yeah. अलावा I can see अगर शाम्स मुलानी नहीं खेलता तो I think he could be one as well because he can Yeah. bat and bowl as well. So अगर कोई टर्निंग पिचेस है तो they would prefer using Shams Mulani over Ramandeep Singh. अगर Hmm. स्पिनर के लिए विकेट नहीं बनी है then maybe they could prefer Ramandeep Singh over Yeah. over Shams. So Yeah. ये अच्छा That's. नाम दिया एक जैनेश ने, Ollie Stone, Hmm. yeah, he was with the MI Cape Town as well, so yeah, there is a possibility that he could be asked to come in as a replacement. Should MI add Behrendorff in the playing 11? Okay, so now let's try to make a playing 11. यार अभी हमें ना playing 11 पता नहीं कि क्या होने वाली है. So this is like just we are guessing, what the playing 11 could be. क्या लग रहा है तेरे को अभी इसमें से? तू एक एक करके Yeah. बता मेरे को क्या लग रहा है तेरे को इसमें से. Yes. आई डू फील लाइक कि मेरे लिए तो आई मीन रोहित शर्मा एंड ईशान किशन ओपनिंग, आई फील लाइक कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अब एक सीजन से दे विल कंटिन्यू. एट नंबर 3 ग्रीन, एट नंबर 4 तिलक वर्मा बिकॉज एक लेफ्टी का वो एक कॉम्बिनेशन में मिल जाता है. एट नंबर 5 सूर्य कुमार यादव. एट नंबर 6 आई एम पर्सनली गोइंग विद टीम डेविड बिकॉज आई थिंक फिनिशिंग का काम वो संभाल लेंगे एंड दैट्स व्हाट आई एम प्रीटी श्योर एमआई फैंस होप करेंगे. एट नंबर 7 शम्स मुलानी बिकॉज द प्लेयर टू बी वॉच आउट फॉर एंड माइट बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स अगर एमआई कोई ट्रॉफी जीतनी है. सो एट नंबर 7 शम्स मुलानी. एट नंबर 8 जोफ्रा आर्चर. आई थिंक लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट हिज बैटिंग स्किल्स एज वेल, सो ही कैन डू
the job for MI with the bat as well. So Jofra Archer is at number 8. At number 9, I feel कि पीयूष चावला should make a place because leg spinner की जरूरत है. We all know कि राहुल चहर ने क्या किया है with the leg spin, and he has been the part of MI's contribution towards the trophy glory. That's what I can say. At number 10, Jason Behendorf for me, and at number 11, I think जो one pacer, I think the likes of Sandeep Sharma या फिर उसके अलावा तो I don't feel like कि I think संदीप शर्मा फॉर मी या फिर अरशद खान के साथ भी देख लेना. संदीप शर्मा किधर है टीम में? No, आई एम अज्यूमिंग कि अगर वो if he joins the team, he might start for me. आपका बताओ. मेरे को देख, अगर मैं स्टार्टिंग में पूछना तो ओपन मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा एंड कैमरन ग्रीन होने चाहिए. नंबर 3 शुड बी ईशान किशन. नंबर 4 सूर्य कुमार यादव. नंबर 5 तिलक वर्मा. अब इसमें खाली एक ओवरसीज यूज हुआ है अभी. स्टिल वी कैन यूज 3 ओवरसीज फॉर मुंबई. नाउ आई एम कंफ्यूज कि अब ये वाला जो पोजीशन है नंबर 6 नंबर 7 का, उस पे अगर टिम डेविड और ट्रिस्टन स्टब्स बेटर कॉम्बिनेशन लगता है कि टिम डेविड एंड डेवल ब्रेविस, कौन सा कॉम्बिनेशन तेरे को सुनने में बेटर लगता है? बिकॉज टिम डेविड विल प्ले फॉर श्योर. मुंबई दोबारा वो गलती करेगी नहीं. सो टिम डेविड इज नंबर 6 इफ यू से. देन नंबर 7 पे डेवल ब्रेविस के लिए नंबर 6-7 is very low मेरे हिसाब से. And that is the reason I think Tristan Stubbs I would play at number 7. So this gives us like 3 overseas already. And the fourth one has to be Jofra Archer at number 8. Okay, so abhi 9, 10, 11 all have to be Indians. Okay, so I think Kumar Kartikeya is one who is going to play for sure. अगर शम्स मुलानी खेलते हैं then that is a very low number मेरे हिसाब से उसके बैटिंग के. या maybe they can do up down वो टाइम पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है. एंड एक और जो बचता है उसमें मुंबई का वो जो तूने बुमराह का जो रिप्लेसमेंट है, दैट इज द वन. बट इफ मुंबई इज ट्राइंग टू गो विद 2 ओवरसीज पेसर्स, देन आई थिंक ट्रिस्टन स्टब्स की जगह देन देयर इज मे बी अ रमनदीप सिंह और शम्स मुलानी पक्का खेल रहे टीम में. सो आई थिंक दैट इज वन प्रॉब्लम विच मुंबई को है, क्योंकि बुमराह के बाहर जाने से आई थिंक थोड़ा ना वो हिल गया मुंबई का पूरा कॉम्बिनेशन. यस, थोड़े अगर कमेंट्स में किसी के 11 आए तो अपन वो भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके, जैनिश है, रोहित, ईशान, तिलक, स्काई, ग्रीन, डेविड, मोहम्मद अरशद खान. हाँ, ये प्लेयर एक अच्छा है, मेरे को देखना है मोहम्मद अरशद खान हाउ ही डज. ऋतिक शौकीन, कार्तिकेय, जोफ्रा एंड जेसन. ओके, बट दिस इसमें भी आई थिंक ऑप्शंस है क्या? 1 2 3. ये ना बॉलिंग लाइन बहुत वीक लग रही है यार इसमें. पता है क्या, इसमें वीक प्लस इनएक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो. बिकॉज कार्तिकेय, ऋतिक शौकीन, अरशद खान तीनों एक साथ तो मेरे को नहीं लग रहा दे आर गोइंग टू प्ले. एंड कैमरन ग्रीन इज आल्सो नॉट एन आउट एंड आउट ऑलराउंडर. ही कैन बॉल, ही इज नॉट लाइक हर मैच में बॉलिंग करेगा ही करेगा. सो आई थिंक इसमें जोफ्रा एंड जेसन को छोड़ के देयर इजंट मच ऑप्शन. बट गिवन कि यार और ऑप्शन है भी क्या मुंबई के पास? डोंट गेट अ नाइस इंडियन बॉलर एज अ रिप्लेसमेंट, वो तो थोड़ा मुश्किल है. एंड जैसा जैनेश कह रहा है कि यार जेसन बेरेंडॉफ विल प्ले. Yes, I know मुंबई की ये हमेशा से स्ट्रेटजी रही है, but now you have to also see कि बुमराह is not there. If can Mumbai afford to play 2 overseas fast bowlers now that Bumrah is not there? That is the question, is what I'm asking. अगर किसी को भी चैट में किसकी भी अगर इच्छा है स्क्रीन पे आके they are ready to talk about their 11 या talk about their own team, just send us a thumbs up in the chat and we'll allow you to come on screen. But थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे. द कैमरा हैज टू बी ऑन. आप कुछ गलत नहीं बोल सकते स्ट्रीम पे. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट राइट नाउ, बिकॉज़ जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, सो वी डोंट माइंड अदर फैंस और जो भी लोग फॉलो करते टीम्स को टू बी ऑन द स्क्रीन एज वेल. If you want, just send us a thumbs up and we'll send you the link in the chat. Kunal is saying MI doesn't have deep batting and bowling is weak. Yeah. So इसमें से दो ही चीजें हो सकती है. या तो they can extend their batting lineup by playing all rounders, or weaken their batting lineup and add extra bowlers. So मुंबई का आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ कि अगर बुमराह होता है टीम में तो वो प्रॉब्लम, बॉलिंग वाली प्रॉब्लम आती नहीं. बट नाउ दैट बुमराह इज गॉन and if Jar Richardson is also gone, who is also used to bowling with the new ball, then थोड़ा लफड़ा है आई थिंक मुंबई का ये सीजन. बट अभिनव, व्हाट आई पर्सनली फील, जहाँ पे मुंबई की स्क्वाड देखता हूँ, आई डू फील कि द राइस ऑफ ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, आई थिंक पिछले 2-3 सीजन खास करके ट्रॉफी जीतने में दिस गाइस हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. बट अगर इस सीजन आई थिंक आई डू फील लाइक कि इवन बहुत सारे इंडियन फैंस भी शायद एग्री करेंगे, लाइक कि द रोहित शर्मा सीजन, आई थिंक
this is something we have been waiting for a while. I think might be हम कहे कि I'm a CSK fan, like पसंद तो नहीं आएगा, but I think that is what 2012 में I remember he scored 500 600 runs. But if he just gets to that mark, I do feel कि बाकी squad ऐसा है कि they will get Rohit Sharma to where the destination will fall. So I do feel कि if Rohit Sharma, the captain, the batter, the player, if he just gets going, I'm pretty sure. और इस बार तो मुंबई में भी खिलाएगा, so just to be back to his home ground, just a perfect occasion for him, just to get going. So you feel like he might be the key guy because captain है अक्सर नजर नहीं डालते because of course we focus on youngsters, but might be the go-to guy. I mean, कभी-कभी कप्तान भी player, I mean, he can be the go-to factor for Mumbai Indians, is what I feel. Yeah, I think his captaincy and leadership skills तो चल हमने देखी हुई है. Now, if he has like a decent season, if he steps up, because करना पड़ेगा ऐसा मेरे को लग रहा है, because he doesn't, किस पे अभी पूरी जिम्मेदारी है. I think Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav have to handle more of the load with Ishan Kishan, क्योंकि now Pollard is gone, दोनों पांड्या चले गए हैं, because दोनों पांड्या and Pollard were winning them I think at least 3 games in a season out of 14 minimum. So I think अगर वो निकल गया, then I think थोड़ा मुश्किल है, and then he has to step up मेरे हिसाब से तो. Dwayne Jansen, good all-rounder. What do you think? हाँ यार, he is literally Marco Jansen यार, खाली नाम चेंज करा है, वो बाकी literally सब सेम करते हैं. वो बैटिंग सेम, एक्शन सेम, बॉलिंग सेम, फील्डिंग सेम. So he is good, but where does he fit in the 11? That is the question, because overseas में 3 तो फिक्स है इनके ओवरसीज, दैट इज जोफ्रा आर्चर, टिम डेविड एंड कैमरन ग्रीन. आपने कैमरन ग्रीन को 17 करोड़ रुपए देके बेंच पे बिठाने के लिए तो नहीं किया है, ठीक है. सो आप वापस टिम डेविड वाली गलती आप दोबारा करना चाहोगे नहीं. एंड अब तो कैमरन ग्रीन ने इंडिया के सामने सेंचुरी भी मार ली, तो अब तो लग रहा है कि खेलेगा हर गेम. सो आई थिंक एंड ऑन अ पिच लाइक वानखेड़े, जहाँ पे बैट आती है, सॉरी बॉल आती है बैट पे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन एसेट टू हैव अ प्लेयर विद सच लॉन्ग रीच. क्योंकि पोलार्ड ने अपना काम करा था, ठीक है. ही आल्सो सिमिलर इन टर्म्स ऑफ स्टैचर. सो या, लेट्स सी. Jay is asking, do you see Shams Mulani in the 11? Yes, I see him in the 11, but the thing is, then what happens with the fast bowling department if Shams Mulani is in the 11? हमने 7 नंबर तक हमने करी थी डिस्कस. 8 पे we were asking Jofra Archer. I could see Shams Mulani batting at number 8, but then Kumar Karthikeya is the other spinner, number 9 पे, Jofra Archer at number 10, and then maybe another Indian fast bowler जो कि पता नहीं कौन है. So इसमें से तो कौन लग रहा है? अरशद खान could be one. I think he's a fast bowler, so I think वो एक ऑप्शन है. And but वो ये again I'll reiterate the same point again and again. Shams, या तो बैटिंग आप तेज अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो, you score around 200 plus runs every game, and then you leave on a little less weekend bowling lineup. तो I think मुंबई को डिसीजन करने वाले. Shams can offer batting depth, bowling में he can offer spin too. Yeah, but that's the thing. Even though he has played the whole his career at Wankhede, the ball doesn't turn much, in a T20 game, especially in the IPL. So let's see what is the game plan Mumbai is going with. क्योंकि पिछले seasons में they have always been playing Krunal Pandya regularly. So I think Shams Mulani could do that as well. But yeah, let's see. Yeah. Bowling is not weak. Ritik and Kumar Karthikeya, they had 1 year IPL experience. They will come with. हाँ यार, I'm not saying it is completely weak. I'm just saying if you compare the overall bowling lineup, can they defend consistently for 14 games or like 12 odd games? That is the question. क्योंकि हर मैच में Mumbai won't prefer going in with Kumar Karthikeya, Ritik Shaukin, or maybe an Arshad Khan साथ में. So we have seen that in the past and it has not worked well. Yeah. ओके, सो मुंबई का तो हमारे पास आई थिंक हमने काफी बात कर ली है. एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं. जय इज सेइंग, आई थिंक एम आई शुड ट्राई गेटिंग संदीप शर्मा इन द स्क्वाड इन प्लेस ऑफ बुमराह इफ ऑफर्स गुड पे. आई थिंक अंकित ने भी यही पॉइंट मेंशन करा था कि यस, संदीप शर्मा इज वन हु मुंबई कुड टारगेट. सो नेक्स्ट टीम कौन सी ले? आई थिंक मुबस्सिर इज सेइंग केकेआर ले लेते हैं. ठीक है, चलो केकेआर ले लेते हैं. एंड मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो विद केकेआर. चल ठीक है, कहाँ है केकेआर? कहाँ है? ये पीछे. ओके, नाउ केकेआर. मुबस्सिर, आई थिंक I feel कि सबसे पहले I mean the opening point might be अभिनव कि कोलकाता नाइट राइडर्स ओवरऑल स्क्वाड काफी अच्छी है, बट
मैं आपके साथ ही जाना चाहूंगा, एंड इवन आई विल लाइक टू नो ओपिनियन ऑफ पीपल इन द कमेंट सेक्शन. If Shreyas Iyer misses out, who is gonna be the captain? I mean, we have to start the conversation with this question. Sorry for that, but that is the talking point now. I mean, what do you feel, Abhinav? यार बहुत बड़ा, बहुत बहुत डिफिकल्ट सवाल है, पता है क्या? क्योंकि इफ यू कीप गोइंग with these names, only Tim Southee is one who feels like a captain material मेरे हिसाब से तो. So in the Yeah. chat यार हमें फटाफट बताओ यार क्या लगता है कौन रहेगा केकेआर का कैप्टन. वाइस कैप्टन तो जयरेश हम बाद में देखेंगे, पहले कैप्टन तो देखे यार, because there is only like one option and I would say Tim Southee. There is Shakib Al Hasan as well, but would you prefer giving him the captaincy? So which are Yeah. the options the chat is saying, वो देख लेते हैं. जय You सिंह, feel like कि नीतीश राणा हो सकते हैं because he has captained well in रणजी ट्रॉफी if I'm not wrong, या फिर दिल्ली की जो टीम है डोमेस्टिक की, he might be option, but जो टीम को लीड करना है it might be not easy for him. So you feel Nitish Rana is a tempting Indian option? no, I think for a vice captain, yes, Nitish Rana is I think a perfect fit right now, but मेरे को नहीं लग रहा कि they would take that chance. So maybe Tim Southee is one, क्योंकि यार वो न्यूजीलैंड को अभी लीड कर रहे हैं इन टेस्ट मैचेस. He is playing T20 and white ball format as well. So यार I think apart from me, I don't see any other option, to be honest. And I hope that Shreyas Iyer ka replacement is someone, replacement in the sense a backup option is someone who has that leadership ability as well. So Yeah. Kunal is saying Nareen, Shakib won't play every match is what Jainesh is saying. Yeah. Devil is saying Rana, Nareen और Saudi. तो Saudi, मेरे को तो Saudi लग रहा है यार. I think but वही है, the thing is coming back to Eden Gardens, I could see them giving Shakib Al Hasan that captaincy wala bhi, because पूरे IPL के तो rule out नहीं हुए ना श्रेयस अय्यर Yeah, पूरे के for the लिए. first half of the IPL, and that is also likely chance. I mean, not Exactly. pretty 100%. Yeah, so I think Shakib then can play because Yeah. नंबर 1 या नंबर 2 T20 ऑलराउंडर प्लेयर है यार. अभी आप इसको बाहर नहीं रख सकते मेरे हिसाब से टीम में. जय सिंह, Do you शकीब feel अल like कि सबसे बड़ा जो सवाल आई थिंक जो आप लोग ने मेंशन किया खास करके शकीब अल हसन, because if I look at the squad I do see कि गुरबाज will be obvious start, then Russell and Narayan should also be a start, one of Lockie Ferguson and Saudi खेलेंगे. So I mean, where will Shakib play? I फर्ग्यूसन mean, हैज टू प्ले यार. फर्ग्यूसन हैज yeah. टू प्ले. आपने 10.5 करोड़ के आसपास उसको 10 करोड़ के आसपास पैसे दिए हैं, आपने ट्रेड करा है. आई थिंक Russell will play, Nareen will play, Ferguson will play, and then they are forced to गुरबाज. play one of Saudi and Shakib Al Hasan. Yeah. Maybe not Gurbaz, because captain कौन करेगा फिर टीम को? But then फिर कीपिंग कौन करेगा? I mean, then might be जगदीशन को स्टार्ट करना पड़ेगा. I assume that. They have to go with Jagdishan, yeah. Yeah. रिंकू सिंह भी कीपिंग करते हैं if I'm not wrong. रिंकू शायद सिंह सब करता है. रिंकू सिंह इज माय फेवरेट प्लेयर इन द yeah. आईपीएल, जो कि दूसरी टीम में से. आई रियली रियली लाइक रिंकू सिंह. The energy he brings in on the field, but yeah, I think KKR will prefer him Yeah. fielding outfield वगैरह में, कैचेस एकदम धमाकेदार पकड़ता है वो. मुबस्सर ने अपनी 11 दी है. I think if Shreyas is not available, then Jagdishan, Gurbaz, Rana as a captain, okay, Venkatesh Iyer at number 4, Rinku Singh number 5, Russell, Shardul, Nareen, Lockie, Umesh and Chakravarti. So इसमें yes, there are 4 foreigners. But Rana again as a captain, what do you think? Is it can he do it? I mean, feel like he's a good, अगर इंडियन कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से, so he might be the potential option, but overseas के हिसाब से I think couple of names है, Russell and the likes of Shakib Al Hasan, but Rana, I mean, I'm not sure because they don't want to just, अगर शाकिब को बना है so might be जो ओवरसीज कॉम्बिनेशन है कोलकाता नाइट राइडर्स का, एज इवन यू मेंशन कि गुरबाज को आपको नहीं खिलाना पड़ेगा, एंड दे माइट नॉट because Alex Hills नहीं है, then the likes of Aaron Finch पिछले सीजन थे, so opening has been a worry unless they think of Sunil Narine going back and again opening the innings for them, so वो different story. But I do feel like कि they won't compromise on the overseas combination, and इसलिए हो सकता है might be a possibility Rana for 6-7 मैचेस की बात है, might think of going with him, but उसके अलावा तो कोई बाकी ऑप्शन है नहीं. बट अभी नो लुकिंग एट देयर ओवरऑल स्क्वाड, आई मीन हमने बातचीत तो काफी गुरबाज की करी है, लेकिन व्हाट डू यू फील ऑफ लिथुन दास? आई मीन, डू यू फील कि वो भी उतने ही टेम्पटिंग ऑप्शन है, स्पेशली नोइंग द फैक्ट कि उतना एक्सपीरियंस ही ब्रिंग्स आउट? बिकॉज आई डू पर्सनली फील लाइक ही शुड गेट अ स्टार्ट, बट गुरबाज इज जस्ट लाइक मोर ऑफ एन टेम्पटिंग ऑप्शन कंपैरेटिवली. बट व्हाट डू यू फील कि क्या लिथुन दास भी उतने ही टेम्पटिंग है? कैन दे गो विथ लिथुन दास आइदर ऑफ गुरबाज?
मेरे को लग रहा है गुरबाज को मैं खिलाऊंगा बिकॉज ही हैज दैट एक्स फैक्टर. और Hmm. ईडन गार्डन्स का जो ग्राउंड है जहाँ पे इट इज अ पिच विच फेवर्स द बैटर्स. मेरे हिसाब से ग्राउंड थोड़ा छोटा है, बाउंड्रीज छोटी है, Yeah. एंड दैट इज द रीजन आई वांट कि जो फर्स्ट 6 ओवर्स है ना उसको अगर ढंग से यूटिलाइज करना हो देन आई थिंक गुरबाज इज द गाय. वो ऐसा प्लेयर है कि यार ही विल either play 20 balls and score you know 40-45 runs बना के देगा, या तो he Yeah. will even not play like 10-15 balls as well. So वो दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है. He will get you a great start, बट ऐसी स्टार्ट भी देगा कि जिससे ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी टीम को. सो Hmm. प्रशांत ने नाम दिया शार्दुल कैन बी अनदर ऑप्शन फॉर कैप्टेंसी. यार 10.5 करोड़ रुपए तो भरे यार इसके लिए आई थिंक केकेआर ने. सो व्हाट डू यू थिंक शार्दुल ठाकुर एज अ कैप्टन ऑफ No, I don't कोलकाता think, नाइट राइडर्स? because I'm a not a big fan of bowlers captain, especially in the T20 format, one day and I'm in test, so we still it's a good format for them to just keep on going. But T20 में it's a very risky format because कुछ captains ने किया है, the likes of Shane Warne, उन्होंने तो trophy भी जीती है, the late Shane Warne, but I think it's not an easy job for Bhuvneshwar Kumar ने किया, but I don't think he's Shardul Thakur, because I do feel कि इस फॉर्मेट में he's still a learning curve and he will learn a lot of things as a bowler, but कैप्टनसी के लिए नहीं. बट अभिनव यहाँ पे एक नाम जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था वो भी बॉलर है, द लाइक्स ऑफ टीम सऊदी. डू यू फील कि और टेम्पटिंग ऑप्शन है कंपैरेटिवली स्क्वाड की बात करें तो, लाइक ही माइट बी द गो टू गाय फॉर देम इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी? यू Yeah, फील सो? given that Iyer is not out for like the whole season, मैं बनाना चाहूंगा आई थिंक टीम साउदी को. I'll just play, if I'm a KKR fan, I would just be on the safer side. और मैं खिलाना चाहूंगा टीम साउदी को as a captain only because I've seen him captain for the New Zealand national team properly. So I think he has that captaincy ability. थोड़ा ठंडा हेड है, मतलब गर्म नहीं होते इतनी जल्दी. जल्दी मतलब क्या, होते नहीं ज्यादातर, तो गर्म होते नहीं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स. बट that is the reason I think Tim Saudi is a decent fit, and he will give you good overs as well. So बैटिंग में आई थिंक राइट नाउ ही इज डूइंग रियली रियली वेल. आई थिंक वो इंग्लैंड का जो गेम था उसमें आते साथ ही कुछ तो 70 के आसपास रन बना दिए थे टिम साउदी ने के. तो आई थिंक ही कैन बैट वेल कमिंग डाउन द ऑर्डर एज वेल. एंड पैट कमिंस का अगर थोड़ा सा भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कोई है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग पिकिंग अप विकेट्स, आई थिंक टिम साउदी इज द गाय. सो या आई थिंक आई विल कैप्टन टिम साउदी मेरे हिसाब से. तो कुणाल ने अपनी 11 भेजी है. इज सेइंग गुरबाज, अय्यर, हर्षित राणा, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रसेल नरीन एज अ कैप्टन. ओके, शार्दुल ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, उमेश यादव एंड वरुण चक्रवर्ती. यार इसमें 11 ही प्लेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. हाँ ठीक है, 11 प्लेयर है. And yeah, this looks a decent lineup as well. Would you consider Sunil Narine as a captain if given a chance, because he has been serving the team for a long time now? Might be because he's one of those overseas players. I think he has been with the Kolkata franchise for now more than, I guess, 10, 12 years. And 2017 May he was also promoted as opener. That worked well for them. So something like that. But because first 6-7 matches की बात है, but आई थिंक इस बार आईपीएल में मैं ये पहले भी कह सको. आई थिंक दैट्स वन थिंग कि इस बार बहुत मुश्किल होने वाला है. आई थिंक आईपीएल एक भी टीम ऐसी नहीं है कि यू कैन से आई थिंक यार इस टीम के हमने तो जीत जाएंगे हम, दैट्स अ विक्ट्री फॉर अस. बट कंसिडरिंग दैट आई थिंक थोड़ा मुश्किल है, माइट नॉट गो. लाइक्स ऑफ सऊदी विल बी मोर अ टेम्पटिंग ऑप्शन अगर आप ओवरसीज की बात करो. सो आई फील कि टीम सऊदी माइट बी द गो टू गाय अहेड ऑफ सुनील नारायण इन दैट कंपैरिजन. Okay, yeah, but now that they have changed, मतलब उन्होंने जो अपने टीम मैनेजमेंट है थोड़ी चेंज कर दिया है with चंद्रकांत पंडित coming as a coach, possible है कि he might give it to someone like a Nitish Rana as well. I won't be surprised if that is the decision KKR takes in the first few games जब तक श्रेयस अय्यर नहीं आते. Jay is saying more than 12 years of experience. We are forgetting Nareen can lead KKR. You need a calm head like him to showcase his talent in captaincy. He's a KKR icon. हाँ यार, मतलब ऑप्शंस तो सारे ही है. इट्स नॉट लाइक ये खराब ऑप्शन है या ये खराब ऑप्शन है. द थिंग इज व्हाट डू यू सी, या हाउ डू यू डिसाइड द कैप्टन ये टीम में. डू यू सिलेक्ट हिम बेस्ड ऑन कि वो लॉयल्टी कितनी करी है पिछले सालों में, या हु इज एन अपकमिंग लीडर, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी. सो आई डोंट नो हु इज गोना बी द कैप्टन. मेरे को लग रहा है कि फॉर फर्स्ट फ्यू गेम्स इट इज सेफ टू कीप टीम सऊदी एज एन ऑप्शन. या और कुछ है बात करने के लिए केकेआर में, और कौन से प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं? या इंपॉर्टेंट सीजन फॉर एंड्रे रसल एंड सुनील नरीन मेरे हिसाब से. तो आई थिंक बोथ ऑफ देम दे हैव बीन with the franchise for a long time, and Andre Russell especially I would say he needs to step up.
only Yeah. because then he is not nothing more than a liability मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सीजन बाय सीजन एंड्रे रसल का मैच विनिंग वो जो एफर्ट्स हम देख रहे थे, आई थिंक द लास्ट वन व्हिच आई सॉ प्रॉपर्ली वाज दैट गेम इन बैंगलोर, वो जो 13 बॉल में 48 बनाए थे, वेरी हिट टिम साउदी फॉर लाइक सिक्स बहुत सारे, आई थिंक वो वाले, उसके बाद से आई डोंट रिमेंबर लाइक अ वेरी वेरी गुड एंड्रे रसल इनिंग्स, तो बहुत जरूरी है कि यार ये हो जाए। बट पर्सनली अभी ना जब मैं इस स्क्वाड को देखता हूँ, आई थिंक बहुत अच्छी स्क्वाड है ओवरऑल, बट आई डू फील लाइक कि मेगा ऑक्शन के पहले जो एक डील किया था, आई थिंक जो शार्दुल ठाकुर को उन्होंने बाय किया था फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, इट वाज अ ट्रेड एंड इवन द लाइक्स ऑफ लॉकी फर्ग्यूसन, बट आई फील कि क्या उसकी जरूरत थी, नोइंग द फैक्ट कि मेगा ऑक्शन है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स है, आपके पास पर्स भी अच्छा होता अगर आप शार्दुल ठाकुर की जगह वही पर्स आप ऑक्शन में यूज करते, आई थिंक 10 CR में तो बहुत सारे शायद 2-3 अच्छे प्लेयर आ जाते, तो आई फील लाइक कि वहां पे एक ट्रिक मिस किया, क्योंकि मेगा ऑक्शन में ट्रेडिंग उतनी मैटर नहीं होती, बिकॉज देन आपके पास आपको जो चाहिए वो बेसिकली मिल जाता है आपको मेगा ऑक्शन में, जो स्मॉल मिनी ऑक्शन होते हैं जिसमें नहीं मिलता, सो ट्रेडिंग इज मोर वर्थ व्हेन इट कम्स टू मिनी ऑक्शंस। बट आपका क्या मानना है, बिकॉज आई डू फील कि ये ट्रिक के ने मिस किया, हमने देखा भी कि इवन देवर गोइंग फॉर आई थिंक निकोलस पूरन, आई थिंक जहाँ पे बजट भी कम था ऑलरेडी, 10 half the amount they were looking for the likes of Nicholas Puran. So you feel like this happened with Kolkata, that the trades they went with, I think अच्छे ही trades है, but जहाँ पे मेगा ऑक्शन है, why जरूरत थी क्या उसकी? नहीं, आई डोंट थिंक सो जरूरत थी, बिकॉज दिल्ली वुड बी वेरी हैप्पी टू लेट गो ऑफ शार्दुल ठाकुर इन दैट केस मेरे हिसाब से तो, बिकॉज दिल्ली में था कि चेन्नई में था, दोनों में से एक में था ना। दिल्ली में। हाँ, तो या तो आई थिंक दिल्ली विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, बट या आई थिंक ये थोड़ा डिसीजन थोड़ा गलत हो सकता है मेरे हिसाब से, इफ ही डजंट परफॉर्म वेल, क्योंकि देन हु इज गोइंग टू टेक हिम नेक्स्ट सीजन, या तो उनको दोबारा ऑक्शन में जाना पड़ेगा, या तो फिर कोई और टीम इतना खर्चा करेगी क्या, दैट इज द थिंग टू थिंक अबाउट यहाँ पे। बाकी कोई प्लेयर है यहाँ पे जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं? वरुण Let's चक्रवर्ती। discuss the likely playing 11 of Kolkata Knight Riders. I mean, लाइकली प्लेइंग 11 अगर किसी को दिखानी है, आई थिंक ऊपर आए थे दो चार, आई थिंक मैंने मिस कर दी क्या, yeah, यहाँ पे let's कुणाल discuss सेठी, कुणाली सिंह, गुरबाज अय्यर, हर्षित राणा, दोनों राणा भाई खेलने वाले हैं, रिंकू खेलेगा, रसल खेलेगा। यस, इसमें आई थिंक गुरबाज अय्यर, नितिश राणा, रिंकू सिंह, रसल, नरीन, ठाकुर, लॉकी एंड वरुण आर फिक्स्ड। मेरे को अभी उमेश यादव ही, आई विश उमेश यादव प्लेज यार, मेरे को तो बहुत मजा आता है व्हेनेवर आई सी उमेश यादव प्लेइंग द आईपीएल। उमेश यादव आई थिंक ही कुड प्ले, आई थिंक हर्षित राणा की जगह देयर कुड बी, do you think अनुकूल रॉय could be that X factor वाला जो हम जो बात कर रहे थे, who do you think could be that X factor for KK? क्या X factor ही नाम दिया ना, कि क्या दिया है सब वाले yes, रूल? an impact player. इम्पैक्ट, हाँ, इम्पैक्ट Yeah, प्लेयर जो भी है, हाँ, तो yeah. क्या लग रहा है इसमें से इम्पैक्ट प्लेयर, who do you think is the impact player? आई डू फील लाइक कि मोर ऑफ स्पेसिफिक बैटर या फिर स्पेसिफिक बॉलर होगा, एंड मोस्टली मुझे बॉलर ज्यादा लग रहा है, बिकॉज बॉलिंग में उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, टीम साउदी एंड लॉकी फर्ग्यूसन, इनमें से आई डू फील कि 3 खेलेंगे। अब उसमें से आप उमेश को कह सकते हो कि आई मीन फर्स्ट अगर बैटिंग है कोलकाता की, तो लेट द लाइक्स ऑफ आई थिंक जहाँ पे वी मेंशन, आई थिंक रिंकू सिंह की बैटिंग फर्स्ट, रिंकू सिंह बैटिंग करे अपनी, एंड जैसे सेकंड इनिंग्स आए रिंकू सिंह को आप बाहर बिठाओ, उमेश यादव एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट, एंड वाइस वर्सा, अगर फर्स्ट कोलकाता बॉलिंग कर रही है, समथिंग रिलेटेड टू दैट, बिकॉज आई फील कि स्पिनर्स तो खेलेंगे, एंड ओवरसीज ऑप्शंस आई थिंक बॉलिंग में काफी अच्छे हैं, फर्ग्यूसन एंड साउदी, सो उनमें से किसी एक को खिलाओ, सो प्रीटी गुड, सो समथिंग लाइक दैट, स्पेसिफिक बॉलर या फिर स्पेसिफिक बैटर, मनदीप सिंह भी हो सकते हैं, सो गुड ऑप्शंस, बट लेट्स सी आई थिंक कैसे आता है। हु डू यू फील कि आपके हिसाब से कौन होगा वो इम्पैक्ट प्लेयर? I just think it could be अनुकूल रॉय। अनुकूल रॉय मेरे को लग रहा है हो सकता है, और अगर तूने बॉलिंग की बात करी, then I think वैभव अरोड़ा, बट द ओनली प्रॉब्लम इज वो न्यू बॉल के अलावा आई डोंट सी हिम एज अ प्रॉपर 4 ओवर बॉलर। आई थिंक वो ऊपर के 2-3 ओवर्स में ही कैन स्विंग द बॉल रियली वेल, वो ऊपर 1-2 विकेट निकाल के दे सकता है, बट उसकी जब बॉल अगर थोड़ी ओल्ड हो जाती है, देन वैभव अरोड़ा is maybe a decent option, not a very good option. So that is the only reason I think अनुकूल रॉय, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन के थोड़े ओवर भी दे सकते हैं, अगर बैटिंग करनी है तो बीच में आके he could give you like a couple of big hits as well. So थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, बट आई थिंक अनुकूल रॉय could be the one. Yes. और मनदीप at number 3, yeah, this is a good shout as well instead of हर्षित राणा, I think he is saying, जो लाइन भेजी थी अपनी 11,
ओके, नेक्स्ट टीम के आगे ऊपर बढ़ते हैं। हर्ष का एक कमेंट है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस इफ स्टार्क बॉल्स लाइक टुडे इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कंडीशन। यार देखेंगे यार, तभी के तभी देखेंगे, बिकॉज यू नेवर नो स्टार्क फिट होके भी आएगा क्या, वो हर दो दिन में एक आध बार इंजर्ड हो जाता है। सो होपफुली ही डजंट बॉल दैट वेल जितनी आज करी थी। नेक्स्ट टीम कौन सी ले यहाँ पे? फर्स्ट कमेंट है डेविल का SRH। ओके ठीक है, SRH के ऊपर बात करते हैं। कहाँ है SRH, कहाँ है SRH, कहाँ है यार, कहाँ है SRH? हाँ okay, the team I am looking forward to see the most after Mumbai Indians is Sunrisers Hyderabad। मेरे को लग रहा था कि अच्छी लाइनअप नहीं बनाई है ऐसा स्टार्टिंग में जब हैरी ब्रूक के ऊपर उतना खर्चा कर दिया था। नाउ व्हेन आई सी द लाइनअप, दिस इज अ वेरी गुड टीम ओवरऑल मेरे हिसाब से। आई थिंक दे हैव मोस्ट ऑफ द बेसिस कवर्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लाइनअप? अभी चल रेटिंग भी करते जाते हैं हम थोड़ी टीम्स को। हाउ मच Yeah, विल यू रेट this team out of 10? Chat maybe everyone yeah, just let us know how will you rate SRH out of 10? yeah. I do feel like कि overall तो specific batters and specific bowlers के हिसाब से I think it's a good squad. I think bowling पिछले कुछ time से SRH की I mean that never has been a problem. I mean I have seen them defending 10-12 runs in against AB de Villiers. I think RCB के against I think 2021 में match था. I think they are a good team when it comes to bowling. So defending का I'm assuming there might be not be a problem. But रशीद खान नहीं होंगे. Just a reminder, David Warner नहीं होंगे, Kane Williamson captain नहीं होंगे. So these were the factors when they used to ball well. इस बार भी bowling team अच्छी है, कार्तिक त्यागी, I think उमरान मलिक. But अभी नो जैसे आपने भी मेंशन किया might be the team to watch out for. But जब ऑक्शन में बेन स्टोक्स थे, कैमरॉन ग्रीन थे, सैम करन थे एंड द लाइक्स ऑफ आई थिंक जेसन होल्डर थे, माना कि आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड की बैटर्स अपने गए, हैरी ब्रूक एट 13 CR, I think that was a good catch for them, might be potential, but एक ऑलराउंडर के पीछे जा सकते थे। आई थिंक बेन स्टोक्स भी 15 CR तक मिल जाते एंड कैप्टनसी ऑप्शन भी होते। सो आई डू फील लाइक कि वहां पे हो सकता है मिस्टेक हो, बिकॉज ऑलराउंडर्स में अभी मार्को एंसन एंड वॉशिंगटन सुंदर ही है, जो मोर ऑफ एन अनटेस्टेड कमोडिटी में मानता हूँ अभी भी आईपीएल के हिसाब से। सो वो एक चीज है आई थिंक। बाकी तो बैटिंग ग्लेन फिलिप्स, क्लासिन, मार्करम माइट बी द कैप्टन एंड द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एंड ही माइट प्ले अ क्रूशियल रोल एंड इवन मयंक अग्रवाल, बाकी तो राहुल त्रिपाठी बेस्ट लुक्स अ गुड स्क्वाड। बट व्हाट डू यू फील कि क्या ऑलराउंडर्स का ट्रिक एसआरएच ने मिस किया इन द ऑक्शन? I don't know यार, आई थिंक उनके पास ना बॉलिंग जो लाइनअप है ना उनकी, स्पेशली द इंडियन कंटिजेंट, दैट इज वेरी वेरी गुड। भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, 6 वेरी वेरी गुड ऑप्शंस मेरे हिसाब से। मयंक मार्कंडे भी अभी उसमें इफ यू ऐड। सो आई थिंक दे, इवन दो दे कुड हैव मिस्ड दैट ट्रिक, बट नाउ गिवन जो अगर आप फर्स्ट 11 देखोगे हैदराबाद की प्लस देयर बैकअप्स, दैट इज रियली रियली गुड। यू शुड या नॉट बी कंप्लेनिंग अबाउट कि हमारे पास ओवरसीज ऑलराउंडर्स नहीं है, बिकॉज अगर ऊपर से लेके अभी तक हमने 11 बनाई अगर, तो अगर डेविल की चल अपन 11 लेके देखते हैं, इससे अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, राहुल, एडन मार्करम, हैरी ब्रूक, क्लासन, वॉशी, भूवी, उमरान, आदिल, नटराज, दिस इज अ रियली रियली गुड 11। एंड द ओनली थिंग विद एसआरएच राइट नाउ इज आपने कोई भी अगर आपने अच्छी 11 बनाई, दैट लुक्स रियली गुड। बाकी टीम्स में ऐसे कि यार इसको खिलाना ही पड़ेगा, इन दिस टीम वो वाली प्रॉब्लम नहीं है कि यार इसको तो हर मैच खिलाना ही पड़ेगा। सो I think Hossain can play some games जहाँ पे he can bowl with the new ball where he gets the wickets ऊपर। So and the way Aiden Markram performed in the South Africa T20 league as well, I think Sunrisers can be very very happy with their captaincy choice, because he also bowled in that competition really really well। उसने यस फटाफट मतलब अपने ओवर निकाले सही टाइम पे, ही came in to bowl those 4 overs 3 overs consistently and ball turn कर रहा था यार बंदा वो। So I am very happy with the SRH decision to make या Aiden Markram the captain here। यस Marco Jansen performed very well. Yeah, he did perform really well as well. So या who are going to be your 4 overseas players? Because Markram will play, Harry Brook will play. This is a given. Now the other two. What do you think about the other two? आई फील कि क्लासिन मे बी, मैं ग्लेन फिलिप्स के बारे में भी सोच रहा था, बट ग्लेन फिलिप्स एट 5 तो शायद मैं क्लासिन के बारे में ज्यादा सोचूं। आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर एंड इंडियन कंडीशंस में इवन द वनडे सीरीज आई सॉ हिम प्लेइंग सम गुड क्रिकेट, सो ही माइट बी अ मोर ऑफ टेम्पटिंग ऑप्शन। बिकॉज मैं क्लासिन को फिर थोड़ा उस रोल से भी देखूंगा कि वो फिनिशिंग टच भी चाहिए, बिकॉज हैरी ब्रूक आई थिंक कि शायद
5 पे बैटिंग करेंगे एंड 6 पे हेनरी क्लासन, सो दैट माइट बी अ वेरी गुड डील फॉर देम बिकॉज देन उनका जो अगर आप नंबर 4 मार्करम 5 पे देन हैरी ब्रूक 6 पे क्लासन, आई थिंक माइट बी दिस गाइस माइट बी द वन की जो डिसाइड करेंगे बिकॉज टॉप 3 इंडियन है, देन द नेक्स्ट 3 आर ओवरसीज बैटर, सो दैट्स वन थिंग बिकॉज देन माइट बी अब्दुल समाद शायद हो सकते हैं, माइट बी वन ऑफ द impact players for that team because उनके लिए as of now तो चांस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है considering the depth that they have. एंड बाकी तो मार्को एंसन शुड स्टार्ट बट देन आदिल रशीद को स्टार्ट नहीं मिलेगा या फिर आपको मार्को एंसन को बिठाना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट विद आदिल रशीद, सो दैट्स वन थिंग बिकॉज 3 ओवरसीज बैटर आई डू फील कि ये खेलेंगे पक्का एंड देन मार्को एंसन एंड आदिल रशीद, मे बी आई एम थिंकिंग ऑफ मार्को एंसन बिकॉज फिनिशिंग टच साउथ अफ्रीका T20 लीग में देखा है मैंने. व्हाट डू यू फील लाइक I आपके लिए think कौन है? for me as well, I think three overseas players are fixed. मेरे हिसाब से that it is Markram, Jansen and Harry Brook. But जो चौथा वाला है उसमें I'm a bit confused. But I think SRH have that possibility, that problem of plenty जो है ना, that could work really really well. Like Prashant is saying कि impact player का जो rule है, that could work really really well for these guys. Yeah. Abdul Samad, if he makes name, क्योंकि अब्दुल समद को ये लोगों ने रखा है अपने पास, ग्रूम कर रहे हैं properly as a player, so probably this could be the season जहाँ पे Abdul Samad really shines as an impact player out of nowhere. So I think yes, they have really great domestic options. Yes, I agree with Prashant there. Saif is also saying impact player could be Abdul Samad. Devil is saying Samad or Karthik Tyagi could be the impact player. Yes, yeah, Tyagi is not a bad shout as well. But मेरे को तो लग रहा है एक आध मैच त्यागी खेल भी जाएगा बीच में, बिकॉज जो फिटनेस वाला इशू है with Bhuvi Natarajan these days, I think वो थोड़ा backfire कर सकता है, and that is the reason I could see Karthik Tyagi getting a game or two. Yeah. Romik is saying foreign players Markram, Brook, Jansen and Glenn Phillip. यार, to leave out Henrik Klassen out of the 11 now, the thing is it will hurt a bit because very recently he has been very consistent. First of all, we have to give him that into T20 format. Henrik Klassen has been really consistent. And Glenn Phillips has come out of nowhere. ठीक है, वो जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ग्लेन फिलिप्स वाज really गुड. फील्डिंग में तो आई थिंक probably the best fielder at the वर्ल्ड कप with जडेजा, and then I think with the batting he scored अच्छे खासे रन भी बनाए थे. So I think to leave out Henrik Klassen is a bit difficult, but I can see that happening as well because impact wise Glenn Phillips can also do that what Henrik Klassen can do. Yeah. बट आई फील कि इवेंचुअली वॉट SRH का ओवरऑल स्क्वाड आई थिंक बहुत अच्छा है, बट इवेंचुअली हमने जो सक्सेसफुल टीम्स के साथ द लाइक्स ऑफ या फिर सक्सेसफुल कैप्टन्स के साथ आई वुड से MS धोनी, रोहित शर्मा या फिर इवन फॉर दैट मैटर केन विलियमसन, जो इवन ही टेस्टेड सक्सेस विद SRH, आई थिंक आई वुड से कि इवेंचुअली SRH की टीम के साथ आई थिंक मैन मैनेजमेंट विल बी, it will all down to that because पिछले कुछ टाइम से we have seen अभिनव की the likes of David Warner, Kane Williamson या फिर even Rashid Khan for certain reasons they haven't stick to their plans, so I think वो एक बहुत बड़ा crucial role खेलेगा and that's why I feel कि Adam Markram might be because with the ball, with the bat, as a captain, as a player, as a man who will have to do that man management, I think वो बहुत key and एक crucial point रहेगा for SRH to test the success that they tested in 2016 to win the cup. So एक बहुत बड़ा role रहेगा for Adam Markram as a captain is what I feel. Yeah, but I think he will do really well only because ऐसा नहीं है कि यार एक चीज होती है to get a new captain. Now the thing is this guy has been with the team for some years now and वो वाला जो सेटअप है आई थिंक साउथ अफ्रीका वाली टीम का भी जो सेटअप था, तो इट डजंट फील लाइक कि कुछ नया चीज या नई टीम लगेगी उसको. इट इज हिज टीम नाउ and we've seen how well Kane Williamson did previously as well with SRH. So I think I really like this option of Aiden Markram as a captain. But ये जो point TG Viper is saying, Markram, Klassen, Jansen not available for 3 matches maybe. Yeah, it is gonna थोड़ा वो होने वाला है. But the thing is, overall season wise, I think this team has the capability to qualify for the playoffs. What do you think? Yeah, I do feel like कि I mean because ओवरसीज बैटर्स तीनों जो खास करके टॉप इंडियन बैटर्स आई थिंक उनके बारे में भी अगर बात करें तो मयंक अग्रवाल आई थिंक एक ही बैड सीजन था, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे थे लास्ट सीजन, राहुल त्रिपाठी तो इंडियन मैचेस में रिसेंटली खेले बहुत अच्छा है T20s के, सो गुड combination of Indian batters at the top and then 3 overseas batters जो middle order में and Markram at 4, I think that will be just a blessing. I think it will work well. I feel like कि बहुत अच्छा होगा and Harry Brook I think
I think वो तो अलग ही अभी वो तो बेसबॉल भी खेलने वाला है. I think that's one thing. So he's got something lot of cricket stuff and then lot of sports stuff. I will say कि बहुत सारी sports खेल रहे हैं different sports and might just turn out to be a good season for SRH. And let's not forget even Washington Sundar and Marco Jansen in the हाँ यार, all-rounders. और एक चीज मैं तो यहाँ पे शेड्यूल देख रहा था, इसमें तो आई थिंक ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आई थिंक एक या दो ही मैचेस, इफ दे आर नॉट, दे आर गोइंग टू मिस, अगर आते नहीं है साउथ अफ्रीका वाले तो यहाँ पे. Yeah. या प्रशांत इज आल्सो सेइंग नॉट अवेलेबल फॉर ओनली वन मैच. या क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल में आई थिंक दीस गाइस आर एक ही मैच नहीं So खेलेंगे Bhuvi उसके to captain in the first match. Can we या see या that? आई थिंक दैट कुड हैपन. और मे बी मयंक अग्रवाल एज वेल, क्योंकि अगर Hmm. आपने खरीदा है उनको तो, एंड Yeah. गिवन द डोमेस्टिक रन जो भी गया है मयंक अग्रवाल का, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम. और एक ही मैच की बात है यार, इट्स नॉट लाइक Yeah. यू नो 4-5 मैचेस हाफ अ सीजन, सात मैच की बात नहीं है. आई थिंक एक मैच दे कैन हैंडल इट. But what can we expect from? I mean, because last season में जिस player का नाम and the reason he got a chance to represent the nation as well. What can we expect from Umran Malik? The same consistency, या फिर थोड़ा ups and downs आएंगे इस season में as a player for him to get in the IPL stuff? मेरे को लग रहा है आई थिंक ही इज अ डेवलप्ड प्लेयर नाउ. और देयर इज अ रीजन, यू नो, इंडिया उनको लिटरली हर मैच नहीं खिलाती. यू नो, स्टिल the management knows, especially the Indian team management knows कि he is a bit raw, and धीरे धीरे Yeah. he needs to get there. How to utilize his pace. I think कोई तो इंटरव्यू में भी आके कहा था कि यार it's not only about pace, I'm working about my line and length as well. वो थोड़ा बहुत भी अगर दिख गया, you know, in this season, I'll be more than happy to see the progress of Umran Malik, because pace And तो I think रहने Dale वाली है. Steyn जैसा coach हो तो I think it's not a worry for Umran Malik as a player to worry about these things. Exactly. So moving forward, और कुछ है क्या यहाँ पे? किसी की 11 तो नहीं देखी थी मैंने. आई थिंक एक आई थी, वो अपन ने डिस्कस कर ली थी. Yeah. तो आप रेटिंग क्या दोगे अभी ना? I think that's one thing. I think let's go with the rating part. क्या रेटिंग दोगे SRH के लिए? मैं तो दूंगा अराउंड 8.5. आई थिंक टीम तो बहुत अच्छी है, यू नो, सनराइज हैदराबाद. और मैं किसी को भी ऐसा 10 नहीं देने वाला. सो 8.5 इज डिसेंट, क्योंकि एज लॉन्ग एज वो यू नो सीजन जीतते बीतते नहीं है, तब तक लगता नहीं कि 10 on 10 टीम है. बट या 8.5 आउट ऑफ 10 is like fair enough for Sunrisers Hyderabad. They have covered most of their bases मेरे हिसाब से तो, with good backup. I agree with you. Even मेरे लिए 88.5 is ideal for SRH team going into the upcoming IPL. Yeah. अगली टीम कौन सी ले, फटाफट कमेंट में डाल दो. पंजाब का नाम आया, so let's go with Punjab Kings. Saying पंजाब, एंड चल ठीक है, पंजाब के बाद then we'll do राजस्थान रॉयल्स, which is Raven is saying. ठीक है, पंजाब की टीम के ऊपर बढ़ते हैं. Where is पंजाब या नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से भाई, जॉनी बेयरस्टो की फिटनेस का क्या? अगर ये बंदा खेलता नहीं है तो इट इज अ ह्यूज वरी मेरे हिसाब से तो. What do you think? But I do feel like he might be because Raj Paksha, I think he had a great season. Obviously, I think they will look for replacement. Even खास करके I'm looking for more of the players जिनका BBL अच्छा था. So I'm thinking of Matt Short from Adelaide Strikers. I think, और नाम भी सुना था वैसे pbks जो fans official उन्होंने डाला था कि वैसे जेसन रॉय भी है but might be not उतना tempting option because Matt Short, let's not remember, मैंने देखा था, he has a great bowling ability and that might help the team maybe. So Matt Short more of a tempting option. उसके अलावा आप जेसन रॉय, एलेक्स हिल्स might not come. ये 2-3 ऑप्शन है. Matt Short for me might be more tempting option. बाकी तो टीम है कि I mean they might be good to go even without जॉनी बेयरस्टो. वैसे पसंद तो नहीं करेंगे because जो एक प्रॉब्लम उनके साथ रहा था कि पिछले सीजन राजपक्षा was not able to be part of 11 because जो टीम ओवरसीज कॉम्बिनेशन था. So if they think of going with that, Rajpaksha might be a starter and then या फिर आप किसी और को ऐड करो. I think just someone, any bowler या फिर ऑलराउंडर को ऐड कर दो instead of Johnny Beirsteau is what I feel. What do you feel? I mean क्या लगता है कौन होगा प्लेयर? I mean might be the potential. शेख भाई, हमने हैदराबाद की टीम अभी जस्ट डिस्कस करी है. अभी थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप स्ट्रीम दोबारा देख पाओगे. एंड मेरे अगर आप ओपिनियन मांगो तो टीम बहुत बढ़िया है. यू कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम सनराइजर्स हैदराबाद दिस सीजन. बढ़िया खेलने वाली टीम, ऐसा लग रहा है, ऐसी गट फीलिंग आ रही है. और अगर चैनल पे नए आए हो तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार. 5,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास हमें पहुंचना है जल्दी. सो प्लीज हेल्प अस रीच देयर. कुछ नहीं होगा यार, यूट्यूब विल जस्ट सजेस्ट मोर पीपल हमारा चैनल, और कुछ नहीं होगा. इफ यू लाइक द वीडियो दैट विल बी ग्रेट एज वेल. सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन, जो बाद में देखने वाले हैं या अभी देख रहे हैं, फटाफट चलो. या सो मैट शॉट, आई थिंक प्रशांत ने यहाँ पे जो मेंशन करा था कि यार बीसीसीआई इज नॉट अलाउइंग मैट शॉट फॉर सम रीजन. या आई थिंक सो, यहाँ मैंने भी कहीं तो इसके बारे में पढ़ा था. एक सेकंड मेरे को देखने दे.
या तू तब तक कमेंट वगैरह ले, मैं तब तक देख. Yeah, let's just go through Pura squad because overseas option में I think Liam Livingston will still stand. Might be the because last season 400 odd runs with the bat and 10-12 wickets with the ball might be the most player to be watch out for apart from Shikhar Dhawan and then Nath Ellis. I think मैंने इनके बारे में बहुत सुना है खास करके फैंस की तरफ से because I feel कि कहते हैं लोग कि माइट बी द गाय जो इंडियन कंडीशंस में बहुत अच्छा करेंगे बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस ही हैज एंड रबाडा एंड सैम करन आई थिंक ही इज रिटर्न टू द ओल्ड फ्रैंचाइज जहाँ से शुरुआत करी थी वेर ही गॉट दैट हैट्रिक एंड आप लोग भी बताओ आई थिंक कि ओवरसीज ऑप्शंस कौन होंगे एज ऑफ नाउ हम लोग जॉनी बेर्सो का कंसिडर नहीं कर रहे हैं लेट्स सी बट अभिनव आई थिंक बिफोर वी गो एंड इवन कमेंट्स में बताओ आई थिंक व्हाट डू वी फील ऑफ सिकंदर राजा यू नो बिकॉज कुछ प्लेयर्स होते हैं हम स्किल सेट देखते हैं लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो एटीट्यूड की वजह से देखते हैं द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट दे ब्रिंग इनटू द गेम एनर्जी दैट दे ब्रिंग इनटू द गेम अभिनव डू यू फील लाइक कि यार एटीट्यूड की वजह से इसकी एनर्जी की वजह से इसको खिला लेते हैं आई मीन ही इज द गाय जो मिरेकल कर चुके हैं आई थिंक पिछले वर्ल्ड कप ही हैड अ ग्रेट वर्ल्ड कप कंसीडरिंग जिस टीम में खेलते आई थिंक इट वाज समथिंग बहुत एक इंस्पिरेशन था बहुत लोगों के लिए सो यू फील लाइक कि सिकंदर राजा द गो टू गाय फॉर देम बिकॉज बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों एज एन ऑलराउंडर माइट बी वेरी क्रूशियल व्हाट डू यू फील हाँ यार, I'm not saying just कि यार एक जो खिलाने के लिए खिला लो, but the thing is जो impact रहा है पूरे बंदे का on a nation, and if a platform like IPL gives an opportunity to a cricketer from Zimbabwe to play at the highest level, I think that is itself a good thing, a great thing to see, to be honest. And Sikandar Raza, Sam Curran, Kagiso Rabada, and Liam Livingston, if even these four are your overseas players, I think you'll be more than happy to have them. And इसमें you have at least three bowling options, proper bowling option. Then you add Liam Livingston to that, जो leg spin भी डाल सकते हैं. So that gives you four bowling options and proper three batting options as well. So if these four are my overseas, then uske alawa we have Shikhar Dhawan who's gonna play. The first 11 will look really good. I think this was the thing with Punjab पिछले साल भी जब भी उनकी ना टीम अच्छी लग रही थी on paper, first 11 was बहुत अच्छी लग रही थी. But they tried to replicate some England cricket का वो जो हमने बात करी थी when Anil Kumble was in the dugout कि यार हर मैच में मारने जा रहे हैं, फटाफट विकेट जा रहे हैं, they are not able to play, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पा रहे अपने. So I think that was one issue. But प्रॉब्लम आ सकती है आई थिंक द मिडल ओवर्स मेरे हिसाब से, तो क्योंकि yes, Prabhsimran Singh is there, but I see him more as an opener. शाहरुख खान इतना एक्सपीरियंस नहीं है. ऋषि धवन, is he a proper middle order batsman? I don't think so. Jitesh Sharma, yes, I can see him batting in the middle overs, but उसके अलावा I don't see much options in the middle order, क्योंकि सिकंदर रजा and Sam Curran, I count them as lower middle order, not just exactly middle order. 4, 5, 6 वाला नहीं देखता मैं. But yeah, सिकंदर रजा maybe, but not Sam Curran. So वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है. यहाँ पे I think अंशुल ने मेंशन करा है कि हाँ मिडल ऑर्डर की दिक्कत आ सकती है पंजाब को, राइट. 11 अगर हम बात करेंगे तो देयर इज शिखर धवन who's going to play. There is इंडियंस में से अगर हम देखेंगे तो शाहरुख खान is going to play, अर्शदीप सिंह is going to play, राहुल चहर is going to play, और कौन है इसमें, ऋषि धवन, जितेश शर्मा विल प्ले, ही इज नंबर 5, प्रभ सिमरन विल प्ले, ही इज नंबर 6. अब एक बचता है उसमें, कुड बी अथर्व ताइडे, आई थिंक ही कैन प्ले एज वेल. हरप्रीत ब्रार, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, जो दे सकते हैं अच्छी ऑप्शन. और कैसे भूल सकते हैं यार, उनने किसको आउट करा था, एबी डिविलियर्स को आउट करा था, मैक्सवेल को आउट करा था, और कोहली. या तो आई थिंक हरप्रीत ब्रार इज अनदर ऑप्शन एज वेल. They have decent players, but only thing is वो थोड़ा experience lack कर रहे हैं वो जगह पे, मेरे को लग रहा है. So like you mentioned, उमरान मलिक का पिछले वाले टीम के डिस्कशन में एसआरएच के साथ, अर्शदीप सिंह के साथ भी सेम एक्सपेक्टेशन है मेरी कि he develops as a better bowler this time around, क्योंकि no ball वाली जो दिक्कत है, I think अर्शदीप सिंह has to figure that out. No better platform than the IPL to do that, कि यार अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना नहीं है, 2-3 महीने का जितना भी टाइम है, फोकस ऑन दैट नो बॉल वाली इशू. He is going to be very important for India in the 50 over format or the T20 format. So I think Arshdeep Singh के साथ वो थोड़ी प्रॉब्लम है, but overall the first 11 is really good. बैकअप में थोड़ी इसमें बहुत वो थोड़ा मेरे को लग रहा है कि यार बैकअप्स में क्या सीन है इसमें. बट आई डू फील लाइक कि खासकर जैसे आपने भी मेंशन किया कि फर्स्ट 11 बहुत अच्छे, स्पेशली आई डू फील लाइक कि द बेस्ट ओवरसीज कॉम्बिनेशन रबाडा, लियम लिविंगस्टन, और इस आईपीएल का शायद सबसे बेस्ट ओवरसीज कॉम्बिनेशन हो सकता है रबाडा, लियम लिविंगस्टन, सैम करन एंड सिकंदर राजा को खिला लो, या फिर इफ जॉनी बेर्सो स्टार्ट्स आई थिंक, या फिर राजपक्षा, दैट विल बी वेरी ग्रेट. बट आई डू फील लाइक कि जैसे आप लोग ने मेंशन किया कि जो मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम्स है इस टीम के साथ, आई थिंक दैट माइट बी रिकरिंग. बट अगर लियम लिविंगस्टन जो वो काम करते जो काम उन्होंने लास्ट सीजन किया, इफ ही जस्ट
I think even 350 runs भी मार देना मैं कहता हूँ, I think this team can definitely qualify this time. But बाकी चीजें भी right in fall because we all know शिखर धवन should have a great season, 500 600 runs का season. But अभी what do you feel कि मुझे लगता है कि what if Sam Curran bats at number as a opener or number 3? I think CSK ने भी try किया, पंजाब ने भी try किया if I'm not wrong. Do you feel like कि of course consistent तो नहीं होंगे, but वो impactful या फिर attacking जो contributions हो सकते हैं with the bat, do you feel कि वो work करेगा considering इनके पास जो middle order है, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा might be a good go for them अगर जॉनी बेयरस्टो नहीं है? हाँ, I think for Punjab to do something good, I think their best players have to bowl the majority of deliveries, and their best batters have to play the majority of deliveries. Sam Curran को अगर आपने सबसे महंगा प्लेयर खरीदा है, then make sure कि he is there in the game throughout the game. So I think I'll back that thing, क्योंकि प्रभ सिमरन को ऊपर भेजने से अच्छा, yes, even though he has that experience in the domestic circuit plus in the IPL, I would still prefer Sam Curran to place, more deliveries than Prabh Simran Singh, in my opinion, if they want to score more runs. So yes, I expect Punjab to do that as well. Kabhi na kabhi, to I think they'll be like, चलो इसको तो हम open ही करा देते हैं सीधे, because शिखर धवन, like you mentioned, season बहुत अच्छा जाना पड़ेगा if Punjab has to qualify. अगर ऊपर ही टॉप ऑर्डर अगर फायर नहीं करता है पंजाब का, then I don't see them, qualifying, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में वैसी दिक्कत है. सो यू इवन दो अगर लियम लिविंगस्टन ने बना दिए अच्छे खासे 350-400 रन, बाकी अगर चीजें जैसे तूने कहा कि इफ दे डोंट फॉल इनटू प्लेसेस, तो फिर तो फायदा ही नहीं है वो रन्स का. सो आई थिंक द टॉप ऑर्डर हैज टू परफॉर्म फॉर किंग्स इलेवन पंजाब, बिकॉज बॉलिंग इज रियली गुड. सैम करन, good option. Kagiso Rabada, great option. Rahul Chahar, great option. Arshdeep Singh, great option. Sikandar Azhar can bowl as well. Liam Livingston can bowl. Uh, they literally have Rishi Dhawan can bowl. So I think they have decent bowling options, mere hisab se. But if I have to rate this team, I think I still not give them more than 7.5. उससे ज्यादा तो मैं देना नहीं, मतलब दे ही नहीं सकता मैं, because the thing is their backups are not. 7.5 भी थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ. I think 6.57 is my rating मेरे हिसाब से तो. एनीवन आप लोग बताओ रेटिंग्स टीम्स की. लेकिन एक और जो आई फील लाइक एक इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर बहुत क्रूशियल पार्ट हो सकता है इस कन्वर्सेशन का, अभी ना हम लोग एक और जो रेटिंग है, आई डू फील कि हम लोग एक और चीज ऐड करते हैं कि कौन सी टीम कहाँ फिनिश करेगी. एंड उसके पहले बिफोर वी गो टू दैट, व्हाट डू यू फील ऑफ पंजाब किंग्स ओवर 15 years? हम लोग आरसीबी की बात करते हैं, दे हैवंट वॉन, बट पंजाब किंग्स आई थिंक बहुत इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा है कि लाइक हर सीजन में हम लोग बोलते हैं कि दे हैव अ ग्रेट स्क्वाड. आई थिंक एज अ न्यूट्रल्स, आई एम नॉट इवन पंजाब फैंस, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम? इज इट अबाउट कि टू मच चेंजेस करते हैं हर सीजन? एंड व्हाट डू यू फील कि इस सीजन में क्या वो क्रूशियल चीजें रहेगी कि दे नीड टू अवॉइड दिस चेंजिंग एंड ऑल? बिकॉज 15 सीजन से उनके साथ भी हुआ है कि दे हैवंट मेड इट टू द फाइनल एक ही बार खेले, बट उसके अलावा दे हैवंट टच्ड द ट्रॉफी व्हाट दे हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर द इयर्स. एग्जैक्टली अजय, तूने उस सवाल पूछने में अपना जवाब भी दे दिया कि द चॉपिंग एंड चेंजिंग कितने टीम्स ने करी एंड दे हैवंट वन एनीथिंग. आरसीबी हैव डन दैट, ओके, एंड दैट इज द रीजन. एंड आई थिंक another reason is RCB over the years has evolved as a brand. Punjab Kings, I don't see it on the same level of as a brand as RCB, only because RCB के पास players भी वैसे थे. पंजाब ने अपना नाम चेंज करा, then they did not have that great a season every time, but RCB, even though अगर उनका सीजन अच्छा नहीं जा रहा था, they were doing something or the other जिससे fans were getting attracted to that team. So I think yes, Punjab have disappointed over the years, and the majority of the reason has been कि वो हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं. They pick up a player for 10-15 crores, they sell him in the next auction, then they pick up another 10-15 crore player, then they sell him in the next auction. So this doesn't work. Which are the most successful teams who have won a title in this competition? Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Gujarat Titans. तो चल ठीक है, अभी एक ही जीती है, एक ही साल हुआ है, but and KKR. So these three teams, KKR, when they were winning the tournament, वो टाइम पे दे हैड दैट फिक्स्ड गौतम गंभीर वाला, जैक कैलिस, ये सब वाले जो फिक्स्ड प्लेयर्स थे, दे हैड देम ऑलवेज थ्रू आउट द सीजन. सो आई थिंक if you stick with players, if you find the right players, then there is no need of chopping and changing. Now the thing is, chopping and changing खाली players के साथ नहीं, यहाँ पे coaching management के साथ भी हो रही है. So that is one of the problem with Punjab Kings at the moment. So let's see how the season goes, but I still feel I don't see Punjab थोड़ा qualifying for the playoffs. एंड आप लोग भी कमेंट्स में बताओ कि यार विल दिस टाइम, आई डू फील कि शायद इस बार शायद हो सकता है दे माइट गो टू प्लेऑफ्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बट
एक और क्वेश्चन है, आई डू फील लाइक एक और जो पॉसिबिलिटी है कि शायद जॉनी वेरसो का रिप्लेसमेंट भी ना अनाउंस कर दे, बिकॉज इवन प्रशांत ने मेंशन किया था कि इन्होंने ओनली 7 ओवरसीज प्लेयर्स लिए थे इन द ऑक्शन, सो 8 वाला लिया नहीं था, तो मन करे कि इस बार 6 के साथ ही जाए, बिकॉज माइट बी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी नहीं चाहते, बट लेट्स सी हाउ इट गोस फॉर पंजाब किंग्स, बट लेट्स होप कि उनका भी एक अच्छा सीजन जाए, which the fans have been waiting for now a longer time. So yeah, I mean, let's see how it goes for Punjab Kings. और एक और चीज वो है ना कि यार आईपीएल इज गेटिंग बैक टू इट्स रूट्स, 2 साल से हम खाली एक दो जगह पे खेल रहे हैं, देन सडनली वी गेट दिस कि यार हमें मोहाली भी जाने मिलेगा, हमें चिन्नास्वामी भी जाने मिलेगा, हमें ईडन गार्डन्स जाने मिलेगा। सो खाली वानखेड़े, पुणे और सीसीआई ब्रिबोन में घूम घूम फिर के अच्छा है कि वो नहीं हो रहा है इस बार। सो या आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ओरिजिनल आईपीएल बैक इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अगली टीम लेते हैं, एक दो टीम और लेते हैं, देन जो भी हम बाकी की जो 5 टीम बचेंगी दैट विल डू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम लोग स्ट्रीम पे आएंगे। एंड लाइक द वीडियो, कीप लाइकिंग द वीडियो एज वेल। अंकित, नेक्स्ट टीम कौन सी ले? आई थिंक रेवन ने बोली थी आई थिंक आरआर लेने के लिए। आरआर पे हम डिस्कस कर, आरआर के लिए ऊपर हमारे पास काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, थिंक इसलिए मैं उसको बाद में करना चाह रहा था। हाँ, आरआर का है या क्योंकि आरआर में अच्छे उनने जो करना था उनने वो कर लिया ऑक्शन में। सो आई थिंक यहाँ पे अंशुल I think सिंह Abhinav, can we say the smartest team when it comes to auction in recent times? I mean, इतना smart because 2021 22 में I remember I think last 3 या 4 minutes में 2-3 overseas player लिए थे, and last season I think जो last auction होता 7.5 CR में, जहाँ पे all-rounders के लिए people were literally throwing close to 15-16 CR, they got Jason Holder for 7.5 CR. So the smartest team when it comes to auction. या देख, उनके पास इतना पर्स था कि दे न्यू कि हमें एक ही स्लॉट भरना है इंपॉर्टेंट, एंड द थिंग इज दे न्यू कि हमारे ये जो पर्स बचा है इसमें एक तो अच्छा ओवरसीज ऑलराउंडर आ ही जाएगा। ओके, सो दैट वाजंट अ वरी फॉर राजस्थान दिस सीजन। नाउ द ओनली वरी फॉर देम इज कि जो फिनिशिंग लाइन है ना वो क्रॉस करनी है उन्हें, ठीक है, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स इज वो रहता है ना कि द गुड बॉयज ऑफ द आईपीएल, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। थोड़ा Kind of New Zealand. हाँ, मतलब थोड़ा जीतने के लिए ना यू हैव टू बी दैट, थोड़ा इविल टाइप वाला फ्लेवर आना चाहिए टीम से। एंड राजस्थान रॉयल्स आई थिंक दिस सीजन या दे माइट डू इट यार, मेरे को लग रहा है, बिकॉज दे फिल्ड अप दैट जेसन होल्डर वाला स्पॉट ना। आई वाज होपिंग दैट दे डू नॉट, बट आई थिंक नाउ दैट दे हैव, आई थिंक रियली the squad is really really good man. I mean, if you see their 11 their backups, भाई आप जो रूट को एज अ बैकअप रख रहे हो जो कि इंग्लैंड का कैप्टन रह चुका है, एडम जैम्पा जो कि ऑस्ट्रेलिया का रेगुलर है, डोनावन फरेरा जो अच्छी खासी वो कर रहा है, स्कोरिंग वगैरह कर रहा है, सो दैट्स नॉट अ बैड टीम एट ऑल। सो राजस्थान रॉयल्स, yes they, but yeah, the thing is they have this injury issue with Prasidh Krishna who is out now. So what do you think? आई डू फील लाइक कि ओवरऑल तो कुलदीप सेन ने भी लास्ट टाइम अच्छा किया था, इवन द लाइक्स ऑफ केम आसिफ आई थिंक ज्यादा आईपीएल खेले नहीं है, बट ही हैज गुड ओवरऑल, आई थिंक सीएसके के साथ जुड़ सके, सो एज अ मैनेजमेंट एज अ प्लेयर आई थिंक उनका वो एक्सपीरियंस काम आएगा आरआर के लिए। बाकी तो आई डू फील कि शायद नवदीप सैनी माइट बी अ गुड गो फॉर देम इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, बट ओवरसीज में तो अब ट्रेंट बोल्ट है, जेसन होल्डर भी, मैं आई एम अज्यूमिंग ही विल बी ऑब्वियस स्टार्टर, सो दो बॉलर्स या स्पिन डिपार्टमेंट आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट spin department compared to Kolkata Knight One of Riders the or नहीं यार, one of the नहीं, I think this is the strongest spin department. strongest. Yeah, so yeah, I mean strongest for them. Uh, but the main question I think जितनी अच्छी उनकी बैटिंग लगती है, and शायद मेरा क्वेश्चन भी यहाँ पे ही लाई करता है कि assuming कि संजू सैमसन, I mean sorry, जॉस बटलर will be opening with the likes of Jaiswal, then 3 पे संजू सैमसन, 4 पे. Now the same question for the third season या फिर second time we will be यार asking बहुत Devdutt चलेगा। Padikkal at number 4 and Riyan Parag at number 6 and the अभी तो खैर तो भी जेसन होल्डर आया, but what do you feel of these two positions for Rajasthan Royals, because last season शायद ये थोड़ी कमजोरी लगी मुझे for them not winning the IPL trophy, so you feel कि इस बार भी वही स्ट्रैटेजी होगी देवदत्त पडिक्कल, या फिर you feel like कि कुछ और चेंजेस के बारे में सोचेगी राजस्थान रॉयल्स? If given, मैं अगर क्योंकि I do not have anything to lose from predicting राजस्थान रॉयल्स का जो भी सक्सेस या फेलियर, I think if Rajasthan can allow Riyan Parag to bat at number 4, I will be really really excited to see that kid, क्योंकि he has that ability to play at number 4 because he's playing थोड़ा नीचे अभी, जो भी number 5 number 6 के बाद आते हैं, then he plays with the tail.
So and he has batted really really well with the tail as well. जो अच्छे खासे रन बनाए हैं वो टेल के साथ बनाए हैं या तुम लोअर मिडल ऑर्डर में आके बनाए हैं. So try giving Riyan Parag that number 4 वाला slot. You have Shimron Hetmyer at number 5. Then you can get Jason Holder to bat as well. But now again वो जो कह रहा था कि यार अगर 7वें पे अगर डिसाइड किया है जेसन होल्डर को खिलाने का, then do you play Donovan Ferreira as well or what? Because Donovan Ferreira is also a big hitting player, but then you have to sit out one of the other overseas players. I think ये एक problem है. But I still feel that अश्विन के साथ तो ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं बीच में. I think अश्विन करवाता है उनसे, पता नहीं मेरे को. But I think अश्विन के साथ they still do that थोड़ा मिर्च मसाला वाला काम. So and let's not forget the जो रोल आई थिंक आपने अश्विन का नाम लिया, आई जस्ट वो मोमेंट रिकॉल हुआ. आई थिंक उनका जो सीजन था पिछला, द लास्ट सीजन विद द बैट, इवन जो लास्ट मैच में ब्रेबॉर्न में सीएसके के अगेंस्ट देखने गया था वहाँ पे, ही वाज द मैन अलोन. आई थिंक सिंगल हैंडेडली उन्होंने विद द बैट जीता. सो विल बी अ वेरी क्रूशियल रोल. बट अभिनव, व्हाट डू यू फील कि बिकॉज एक जो नाम उन्होंने लिया था, ऐसा लगता भी है कि थोड़ा टेम्पटिंग ऑप्शन Joe Root, he's back, and for the first time उनका भी welcome to the Indian and incredible Premier League. But do you feel कि एक आध दो गेम Joe Root को मिलेंगे, या फिर you feel कि वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपना ओवरसीज कॉम्बिनेशन? नहीं यार, I think if you see the look at the overseas combination, Josh Butler will play, Trent Bolt will play, Jason Holder will play, and Shimron Hetmyer has to play. So now क्योंकि like to like कौन है इसमें? The like to like is Devdutt Padikkal and Joe Root, which is impossible because you cannot keep. अगर आपने ये switch करा, then you have to remove another overseas player. So that is one problem which RR could have, but I still feel they have, I think, a better squad only because Jason Holder ने एक अच्छा खासा gap fill कर दिया है in that team. So with that bowling option, wicket taking ability, leadership ability, and that batting ability in the end, जो अगर runs बनाने हो तो वो करके दे सकता है. And coming back to the Savai Mansingh Stadium, I think that stadium पे अच्छे खासे runs बनाए संजू सैमसन, जॉर्ज बटलर वगैरह ने. Trent Bolt will get nice movement from the pitch as well in that ground. So I think this is a decent side. अगर rate करना होगा तो then I would give them 7.58 के आसपास. I still feel थोड़ा improvement हो सकता था. I don't know where, but overall judge करते time team में I think it could be like extra 0.5 वाला जो है ना, that is जो बाकी teams के पास हो सकता है जो IPL जीत सकती है. If Rajasthan wins the title with this side, I think I'll be very very excited only because यहाँ पे जैसे तूने कहा कि वो जो नंबर 4 वाला है, that is a problem. It is not कि वो solve हो जाएगा ऐसे. You cannot send literally Ashwin, Riyan Parag बीच में rotate कर करके. So I'll still give them 7.5 or 8 मेरे हिसाब से तो. But imagine, Adam Zampa not playing the whole season, because I don't feel कि जैसे जो रूट की भी बात करी, I think they will not disturb. And Adam Zampa ऐसा, I think spinner, he's a good overseas spinner. I think मैं highly rate करता हूँ for a player like him. Yeah. And आपने mention किया कि might be the season, like after 14 years, I think जहाँ पे they might be getting more closer to win the second trophy. Last time भी they were so close, but so far, unless I think we all know, because Gujarat Giants first season first win, and उन्होंने भी RR की, I mean, we can say कि footsteps follow किया कि first season में जीतना. But let's see, yeah, looks pretty good squad. लेकिन अभी now, what do you feel कि I do feel कि इस बार भी playoffs में जाएंगे, but उसके आगे क्या होगा, I think it's a bit tough for me to predict on that. But आपको क्या लगता है? What do you feel कि नहीं यार, मेरे को भी नहीं पता. The thing is, after you reach the playoffs, it is literally your temperament, your ability, mental ability वगैरह वाला scene है. बिकॉज फाइनल का जो प्रेशर होता है ना, हर टीम हैंडल कर नहीं पाती है, हर प्लेयर हैंडल कर नहीं पाता. सो लास्ट सीजन इफ यू रिमेंबर, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, राजस्थान वन द टॉस एंड चोज टू बैट फर्स्ट इन द फाइनल. या सो आई डोंट नो, मे बी दे थॉट कि यार उनका डिफेंडिंग स्ट्रेंथ है, बट या दे डू नॉट वांटेड दैट स्कोर बोर्ड प्रेशर जो होता है फाइनल का, वो नहीं चाहिए था. मे बी दैट इज द रीजन दे चोज टू बैट फर्स्ट. बट बॉलिंग करते बिकॉज it was possible to chase that target down. If they could have got like early wickets, and उनके पास bowling थी to get those early wickets as well. So maybe वो थोड़ा pressure वगैरह में आ गए होंगे, but yeah. I don't know, man. I still feel this team can again make the playoffs only because they have kept the team same and they've added a strong point to their team in Jason Holder. So yes, yeah, they have all the reasons to qualify. Yeah. Actually saying भाई इनको दर्शन साना का लेना चाहिए था यार. एक ही बात है, क्या I mean दर्शन साना का, yes, he is more of a batting all-rounder. Jason Holder is a bowling all-rounder, but he's not a bad batsman. So I think I would still take Jason Holder in this team, क्योंकि Shanaka will not give you those consistent 4 overs या
maybe 3 overs at times regularly. Prashant is saying, who do you think will be potential replacement option for injured players? यार या तो हम तो खाली अपने ओपिनियन दे सकते हैं. I don't know whether the team is looking at that or not. For example, मैंने तो जाहिर But रिचर्डसन अभी का no, is it कि ओबेथ में कोई भी injured है? Because yeah, I think he's I injured. heard some. So yeah, I mean, I think there's one so I guy. think क्या नाम है यार उसका? Even Koidze? so, no. So the thing is, when it comes to replacing fast bowlers, I only look at Perth Scorchers in the BBL क्योंकि वो हर season they play at least 4 or 5 fast bowlers. And there was this guy, I don't remember his name, Matt Kelly. But the thing is, हम जो intention से देखते हैं, maybe the franchises are not looking at from that intention. So there was this guy Matt Kelly or something, और Yeah. Lance Morris जिसको कह रहे थे कि यार he's the next Sean Tate. So maybe a replacement from that point of view is possible. क्योंकि लांस मॉरिस 150 के आसपास बॉलिंग करते हैं, 150 किलोमीटर वाली बॉलिंग करते हैं. लगता तो नहीं है दिखने में, बट ही डज दैट. सो बट लेट्स सी कौन आते हैं रिप्लेसमेंट. हम तो खाली अपने ओपिनियन दे सकते हैं. एक और टीम लेते हैं. फटाफट बता दो यार चैट में कौन सी एक लास्ट टीम हम डिस्कस करें. देन विल रैप अप द स्ट्रीम एंड कवर द रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीम. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू हैव लाइक द वीडियो एज वेल. एक आध अगर कमेंट आ जाएगा नेक्स्ट टीम का तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. वरना हमने कौन सी टीम डिस्कस करी आज हमने? सीएसके हो गया क्या? सीएसके नहीं करी ना हमने. CSK, RCB, DC, Gujarat and LSG and DC. So okay, DC. I mean DC का नाम आ गया. So let's go with DC. Yeah. Nilanshu is saying DC as well. Okay, let's do DC. Hi Nilanshu. Delhi Capitals first big blow. Rishabh Pant is out. David Warner is the captain. Captain ही है ना कि अभी और भी कुछ हो गया है जाके? Yeah, David Warner is the captain. ठीक है. I'm sure we'll do CSK, RCB, then और कौन सी टीम है यार? LSG and Gujarat. LSG Gujarat will do it tomorrow. So tomorrow मतलब जो next stream में हम करेंगे IPL वाली. So make sure whatever it is you are subscribed to the channel and proper segments यार. We do not want to rush through every team कि यार हम खाली 5 मिनट इसके बारे में बात करें and then let's move on. So let's थोड़ा टाइम देते हैं हर टीम को. अभी IPL बहुत दूर है तो हमारे पास 14 दिन का टाइम है. So don't worry. दिल्ली कैपिटल्स की टीम के ऊपर बात करते हैं थोड़ी. स्टिल मैन मेरे को नहीं लग रहा कि दिस टीम हैज डन इनफ टू इवन मेक द प्लेऑफ्स. I think opening still I think one of the good opening pairs in the upcoming IPL like Warner Shaw. I think उनसे बहुत उम्मीद रहेगी. ऋषभ पंत तो नहीं रहेंगे. So वो एक spot already middle order. I felt like कि थोड़ा concern था and अभी उसमें से ऋषभ पंत का जो unlikely to play the IPL वो वाला जो scenario I think that will hurt them. But I do feel like कि Mitchell Marsh I think आज भी दिखा. I think वो तो आज से ऐसा लगा कि आज से IPL चालू करनी है. Delhi fans will be very happy with the Mitchell Marsh. Anyway, I was having a conversation with आज हम लोग मैच देख रहे थे. He was like कि यार ऐसे अगर वो दिल्ली के लिए खेले तो मजा आ जाएगा. So emotions are true. अभी ना मैं जब भी इस प्लेयर का जब भी नाम देखता हूँ with due respect to Riley Russo, ऐसा क्यों होता है जब when he has a good day he scores 100 but the bad day he ends up scoring 0. So ये इनकंसिस्टेंसी तो बहुत अलग है. I think Riley Russo की इवन PSL में अभी अच्छा किया, सेंचुरीज मार रहे हैं but done inconsistency. But अभी ना what do you feel of the exciting players जो मैं देख रहा हूँ कि Phil Salt I think keeper है and might be a starter as well because keeping options में अभी ऋषभ पंत नहीं होंगे unless कि they think of सरफराज खान. Do you feel कि Phil Salt should be the starter in the absence of Rishabh Pant or you are going with Sarfraz Khan as the keeping option? यार पता नहीं यार. I don't know because Phil Salt, if I play Phil Salt then he is not like a middle over batsman. उसको ऊपर ही खेलना जरूरी है. I think David Warner, Prithvi Shaw, Mitchell Marsh is going to be my top 3. And that is a very very strong top 3. I think one of the match winners, ये team में match winners हैं. David Warner can win you a game, Prithvi Shaw can win you a game. But the only thing is सबकी पोजीशन ना ऐसे पास में ही आती है. It's not like he is a specified middle over batsman या lower middle order batsman. Because if you see Yash Dhol, he will prefer batting ऊपर, Sarfaraz Khan will prefer batting ऊपर, Prithvi Shaw ऊपर, David Warner ऊपर, और कौन है यहाँ पे? Riley Russo prefers batting ऊपर, Manish Pandey भी ऊपर. So Phil Salt भी 1, 2, 3 में. So I think एक ये problem आ सकती है for this team. And कि वो नया बैटिंग ऑर्डर सेटअप करना पड़ेगा टीम को. एंड द बेस्ट थिंग राइट नाउ दैट कुड हैव हैपेंड इज अक्षर पटेल का फॉर्म. आई थिंक दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस टीम. आई मीन नॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट थोड़े प्रॉब्लम्स कम कर देंगे इफ ही बैट्स इन दैट वे जो अक्षर ने अभी जो रिसेंटली करी है. तो
if you see the overseas options, I think three are fixed: Henrik Nokia, Mitchell Marsh, and David Warner. जो आखिरी वाला है, what do you think should be? Do you prefer Lungi, Sani, Ngidi, or do you want to play an extra batsman only because the Indian batting might look a bit weak? What do you think? Rovman Powell in the middle overs? Yeah, I mean it's quite tough because जो आपने नाम mention किया, I think Warner, Robin Powell with the finishing ability he has got, I think should start, and Mitchell Marsh भी at number 3, but then one of Lungi and Giddy and Henrik Nokia में से किसी एक को ही खिला पाओगे आप. And if you look at the batting, still good है comparatively जो उनकी bowling है, because bowling में I do feel कि Henrik Nokia और Lungi and Giddy में से एक ही खेलेंगे, so I will go with Nokia. But then I do feel कि the Indian bowlers जो है Mukesh Kumar, Kuldeep Yadav, and the Aman likes Khan. of Sunil Don't Ahmed, I forget mean Aman that's not Khan. I am very even, excited yeah, with this Aman move. Khan, I think even he might be a match winner for them, might be going forward. So bowling option, I think Mukesh Kumar, I think बहुत नजर उन पे रहेगी. कुलदीप यादव अक्सर and अक्षर पटेल, I think spin department को I am hoping कि वो अच्छे से चलाए, because I am hoping कि ये दोनों ही खेलने चाहिए unless they think of having Lalit Yadav as their third option. So वो तो sorted है, but I do feel like कि what do you feel of Manish Pandey? I mean, do you feel कि he can be the Dinesh Karthik, जो दिनेश कार्तिक ने last season दिखाया कि old players, old is gold? Can Manish Pandey do that? Because let's not forget फर्स्ट सीजन से खेल रहे हैं, and if I'm not wrong शायद फर्स्ट सीजन में ही आईपीएल सेंचुरी मारी थी उन्होंने. So can Manish Pandey be the Dinesh Karthik for Delhi Capitals? I don't know, man. I mean, I don't think so. But if needed, Manish Pandey is not a bad player to have in the top three. क्योंकि उसके नीचे खिलाना, it's like आप अपने टीम के लिए problem create कर रहे हो. Because Manish Pandey is a sort of player who likes to anchor, and that is the reason उनको ऊपर भेजा जाता है जो भी टीम में खेलें. Because everyone knows कि वो finishing वाला role नहीं कर सकते. So I think that is the reason I don't see him playing many games as well. वो I think forced injury वगैरह से कुछ हो सकता है, या if he's playing, then I see Mitchell Marsh coming down the order. But right now the form Mitchell Marsh is in, do you want him to play down the order? That is the question. क्योंकि अगर Manish Pandey, if he gets in the team, he bats at number 3. If he bats at number 3, सबका position एक एक नीचे चला जाएगा. Mitchell Marsh goes down at 4, Powell goes down at 5, या जो भी है नीचे करके एक एक करके सब नीचे जाएंगे. So do you want that to happen as well? So I don't think so. They would prefer that. So Akshar Patel, yes, I think they can try, some batting tricks with Akshar Patel कि यार इसके साथ हम utilize करना देख सकते हैं, because he's a left-hander as well. So maybe he could bat at number 5 for me, मेरे हिसाब से तो. And number 5, number 6, whatever. Then Sarfaraz Khan is there. I think he can bat at number 5, number 6 as well. Lalit Yadav, maybe lower down the order as well. So Aman Khan, I want to see Aman Khan play in this season a lot, because I've heard a lot about him. I've seen some bits of him. He's a proper I think cricketer. I think Delhi have done really, really smart business with Aman Khan, in my opinion. So let's see. But the thing is, इनकी first level बनाना थोड़ा difficult लग रहा है for some reason. Maybe because what is the combination they are going with. That is one thing. So let's see. If in the chat अगर किसी को अपनी दिल्ली की प्लेइंग 11 बना के आपने रखी है या देनी है, तो आप बता दो, हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं. Otherwise we'll take some comments. Anshul is saying Will Jacks का बैकअप कौन हो सकता है? I think there is talks about Michael Bracewell being a replacement for Will Jacks. I don't know, but Will Jacks is a huge miss as well. I think South Africa T20 league में he did really, really well. कौन सी टीम थी? प्रेटोरिया कैपिटल्स ही तो थी, यहाँ दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी. So Will Jacks did really, really well with that team. So huge miss मेरे हिसाब से RCB, because he was probably one of the best backups, या maybe what do you say, the best backup who could play consistently in the first 11. नीलांशु ने अपनी 11 भेजी है, saying Shaw, Warner, Manish Pandey, Mitchell Marsh, Powell, Sarfaraz, Akshar, Kuldeep, नॉर्किए, मुकेश कुमार एंड खलील. इसमें एक प्लेयर का मैं नाम देख रहा था, अमन खान का नाम नहीं है यार इसमें. आई स्टिल फील यार अमन खान विल प्ले यार, मेरे को लग रहा है. खलील अहमद, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन. I still feel I would prefer Chetan Sakaria over him, because he has a bit more variations मेरे हिसाब से तो. But yeah, I think this isn't a bad lineup as well. मेरे हिसाब से तो they have but वही है कि Powell, Sarfaraz and Akshar can that middle order, because they bat only till 7.
Kuldeep को मैं as a batsman get नहीं रहा only because it's a T20 game. So is that 5, 6, 7 strong enough? That is what we'll have to see. Okay, he's saying that Khan is an impact player. Okay, yeah, possible. Yeah, then I think it makes sense. Lalit Yadav का नाम नहीं था इसमें. Okay. Any update on Pant replacement? I don't think so. अभी तक कुछ आई है from the Delhi camp. अभी I think there are two more weeks left. So I think from now on we'll start seeing players coming in, going out to be injury वगैरह से clarity मिलना शुरू हो जाएगी अभी से. Roy is saying Warner, Shaw, Marsh, Manish Pandey. I would switch between Manish and Marsh because अगर 4 पे Manish Pandey है then I think that's a थोड़ा issue है. But can we say कि Mitchell Marsh eventually he will I think problems आने ही नहीं देंगे middle order में considering the kind of batting he has. I mean because पिछले season we had a good season. So do you feel कि ये जो top order है they will just keep on avoiding explosion of middle order because उतनी weak है but उतनी strong उनकी top order है and the like chemistry of Warner and Ponting I think might turn out to be good. What do you feel? I mean क्या लगता है? I think top order they keep on resolving the issues of middle order? I don't know. I think एक जो player है, I mean not like a player, एक जो profile है player का जो ये problems काफी सारे solve कर सकता है, that is a batting all-rounder. If Delhi could have signed a batting all-rounder ना कहीं से, I think that could have done really really good for them. Because if you say for example, if you remove Manish Pandey, if you add a batting all-rounder in there जो थोड़ी आपको bowling में दे सकता है, maybe like a spin or something, then I think this 11 looks really really good then. But otherwise and Lalit Yadav might be the starter. I mean जैसे आपने mention किया description of the player to start because वो थोड़ी bowling करते हैं as off spin and batting he does bat at as a top order. So but then Manish Pandey को miss करना नहीं चाहेंगे because अभी लिया तो they will like to start with him. Yeah, but I don't think they have thought of Manish Pandey as a short starter. Yeah, I don't know. Yeah, Lalit Yadav can give you those off spins as well. इसमें bowling options क्या है? I don't see Mitchell Marsh giving you like 4 overs every game. Akshar, Kuldeep, Khalil, Mukesh and Fizz are these. अरे इसमें तो नॉर्के का नाम नहीं है यार. नॉर्के का नाम कि वो थोड़ा लीड करने वाला bowling lineup. Yeah, but so, okay, if you remove one of them, does it still look very strong? I don't know. So you feel कि अक्षर थोड़ा इस बार ऊपर बैटिंग करेंगे अभी तो इंडियन टीम में भी कॉन्फिडेंस मिला है उनको and that might be a possibility. Sure, Delhi has to do that because मैं होता अगर क्योंकि now Indian team is also trying to do some of the other thing with अक्षर पटेल क्या इसको हम बचा के रख सकते हैं और ऊपर भेज सकते हैं. So I think if India can do it, I think Delhi sure will have to do it or try to do it with Akshar Patel to bat him थोड़ा ऊपर so that. And given that he's a left-hander plus Kotla पे he has done recently, I think Kotla में तो run बनाए थे वो जो second test match था where he played that type of an innings. So yeah, nothing to lose. Ninachu is saying in place of Manish Pandey, Aman Khan is good at number 4. Yeah, I can vouch for that. Okay, then I think this was it for tonight. Thank you so much, yaar, everyone. बहुत मजा आया इस बार. And I think slowly we'll build up to that proper 11 discussion, proper impact player discussion as well. So just keep supporting the channel, keep coming up every stream. We are covering the Women's Premier League as well, so keep supporting us on every platform. Subscribe to the channel, like this video, join the other streams, follow us on all social media platforms, Twitter, Instagram, LinkedIn, everywhere, wherever you are. Thank you so much for the recent support for the Women's Premier League as well. Really appreciate it. And thank you so much, Ankit, and everyone in the chat. Some new names today as well. अगर थोड़े बहुत मिस हो गए कमेंट तो यार very sorry. बहुत सारे कमेंट्स आए थे आज. So thank you so much, Ankit, once again, and thank you so much everyone in the chat as well. So see you guys tomorrow for a different stream, and then we'll talk more about the IPL moving forward as well. Thank you so much. Have a good night. Stay tuned.